The moment we sense a danger, we try to save ourselves, right? Then we try to secure ourselves. So we secure our own people. See, ye kya hai? Strategizing. So if you are the student who has prepared for it, or if you are the people who understand that competition starts right at a very young age, none of you can say कि ये tough है या easy है. The moment you start your journey right from this comprehensive 3D perspective, 5D or 7D perspective, right? You are now suited for civil services. Why? It is looking for generalists. So UPSC is not creating a standard. You have to get 300, only then you can top the exam. That perception has been made by us. Simplification is good. We'll simplify. We'll understand it at the very basic level. Household level पे समझेंगे उसको, right? But you cannot be mediocre. Good morning. Okay. You look at the change of syllabus, right? Let me just give you very basic things. 2008 syllabus changed, right? Of the optionals. So I gave my attempt here also. Fine. And I gave my attempt here also. Fine. My marking pattern started from 307 in first attempt, 323 second attempt, 337 third attempt, and then 350 something in fourth attempt. Why did there was this increase? Score नीचे भी हो सकता है. It happened with sociology. My first attempt was physics, second, third, fourth with sociology. Fine. Sociology, I got first 270 marks, then 308 marks, and then in the last attempt 266. Imagine, out of 600. Still I gave my interview. 133, 133. I could not imagine कि दोनों पेपर में एक जैसी मार्क कैसे आ गए. Many times you will see in the UPSC means you are getting same marks in both the papers, right? Which seems illogical. शायद एक पेपर किसी का ज़्यादा strong हो. It is generally possible that one of the papers seems to be more stronger compared to the other, right? That means उसमें scaling हुआ, moderation हुआ और एक number मिल गया. See? So what exam you are giving, you should understand that exam also, not just the syllabus that you are studying. So if you see from here, the pattern changes, right? Till here, all is well. नहीं? सब बढ़िया है. Everybody is happy. Win-win situation, right? Any Tom, Dick, Harry writing pubet, उसको नंबर मिल रहा है. मैं भी था उस Tom, Dick, Harry में, है ना? मैं Harry था, but fine. They all are getting marks. I also got marks. Yes. I had a friend from IIT Delhi, electrical engineer, AIR JE, rank 77. Fine. उसको वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था. उसका ऑप्शनल था केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आई थिंक. Then I told him drop chemistry, take PubAd. So he took it and I taught him, like we both studied together. He actually gave the last interview because of PubAd. Now that was the time when you see that everybody who felt, even before this, PubAd was introduced in 1987. So as far as the optionals are concerned, it is the latest optional, right? PubAd itself was born, when was it born? You said 1800? Who gave you this invitation? कि पैदा हो गया? अरे PubAd was born when people were born, when we were born, when civilizations were born. The nomads also used a strategy to catch animals. नहीं करते थे? Fine. या ऐसे ही आ जाता था डियर उनके पास कि आओ भाई. Fine. मृग है ना, स्वर्ण मृग, right? So obviously they were also planning, they were strategizing, they were fighting nature. Were they not fighting nature? Saving themselves from rain, thunder, storm, करते तो थे, कुछ तो करते थे. They also were strategizing their survival. So the moment you say PubAd, right, administration is instinctive to us. It is part of us. The moment we sense a danger, we try to save ourselves, right? Then we try to secure ourselves. Maybe we secure our own people. See, ये क्या है? Strategizing. Every administration is strategizing. It is trying to work in a way to achieve certain goals. That is what administration is. So it was not born. It was born in America as a subject, as an area of function, as something that we do. It was there since, I don't know,
टाइम इमेमोरियल। जब आपने व्हील बनाया तो आपने क्या किया? तो आपने गाड़ी चलाई है। द मोमेंट यू मेड द व्हील, व्हाट हैपेंड? डिड यू फास्ट ट्रैक सर्टेन प्रोसेसेस? डिड यू स्पीड अप सर्टेन थिंग्स? कुछ किया? क्या फायदा हुआ उसका? व्हाट, हाउ डिड यू बेनिफिट? फायर, व्हील, हाउ डिड यू बेनिफिट? हो गया, फिर कहाँ गए उसके बाद हम? फाइन, अमृत काल तो आज है। Where did we go with that wheel? What did we do? Did we have relatives in another city? Did we have so much of urbanization? We were going from one place to what were we doing with that wheel? We reduced our effort. We were not going anywhere. We reduced the effort. Fire made the food little tasty. What is this? Experience. That was not a bookish knowledge. That was experience. Learning through doing. यही तो हुआ ना? Learning through doing. So पबेट में एक वर्ड आता है in general when you study anything, psychology पढ़ो, philosophy पढ़ो, right? Heuristics. Have you heard this term, heuristics? You go to a lab. All of you have passed 12th, I think, no? Then fine, right? क्योंकि अभी डिग्री के बाद we are not sure about degree of anyone, right? Are you listening to the politics today? तो डिग्री पे बड़ा डाउटफुल है ना? अपनी डिग्री साथ लेके चला करो। Fine. So, heuristics. Heuristics is a term. You go to lab. All of you go to lab. I think all of you have gone to the lab, right? Then somebody gives you a lab manual, or you have a lab manual, right? आप क्या करते हो? Lab manual में steps होते हैं. You follow that, right? They have already been developed by someone. Somebody's already studied it, created the steps. आप जाओ follow करो. ठीक है? वो क्या है? Is it learning by doing? No. It's doing by learning. दोनों में फर्क है कि नहीं है? किसी ने बोला मोहित भट्टाचार्य बाइबल है पबेट का। फाइन, तो मैं भगवान हूं फिर। Our level, our methodology, our content would be much beyond that. And I'm not going to say it. I'll only ask you after 5 months once you study that. We are so confident in what we teach. If somebody says, Prasad and Prasad theories I have studied, I know a lot of students who give mains, right? They will get 250, 260 marks. When I ask them, कि भाई Prasad and Prasad पढ़ा अच्छा, ये बताओ basic logic, they don't know. Just mugging up those terms. That means you are studying a subject of which or whose nature you have not understood. If you're writing ethics paper, can you write ethics paper as economics paper? ये step 1, step 2, 3 ये डायग्राम है ना? नहीं बना सकते ना उसके अंदर। कछुआ, फ्रॉग ये सब बना के दिखा सकते हो? This is the tree, trunk, leaf, stem, roots बना दिया, okay, यहाँ ये डाल दो, नहीं। Ethics paper must be written on the sense that you develop. You cannot simply say, I have used rule of law here, I talked about principle of natural justice, I wrote the Prevention of Corruption Act, ये सब मैंने लिख दिया सर, but लिखा कैसे? Fine. Ultimately, the food has to go in the stomach. That doesn't mean you'll eat all of that together. Aesthetics has a big role to play. Heuristics क्या होता है? When you do trial and error and you learn. Fine? And you learn and you may develop the knowledge by your experience. One knowledge is developed by experiment. Fine? So researchers, scientists did experiments. They developed knowledge and they said this knowledge is foolproof. This is scientific knowledge. Now if you want, you can use it. If you use this knowledge, it is very clear कि जो भी इसमें है, whatever is mentioned, that is going to happen exactly the way it is. Fine? But this has spontaneity. इसमें कोई step by step clarity नहीं है. Heuristics क्या? It's also a way of learning. This is also a way of learning. But ये experience based learning है. Right? Now when you think of an administrator, let's come back to today, right? Or our subject. When you think of an administrator who wants to manage a crowd, who wants to manage a communal riot, how is he going to do it? Should he rely on a textbook that was given to him in his training? Or should he rely on his own wisdom? Now, how can you say that only wisdom? Let's say he doesn't have wisdom. वो ऐसी नोट्स रट के पहुंचा है, बन गया IAS तो। लबासना की रिपोर्ट है, you know?
Labasna has been writing 3 years consistently report to UPSC. What kind of bureaucrat are you sending to us? कि इनको ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग में पास कराना मुश्किल हो रहा है. IRS इनकम टैक्स के पेपर में फेल हो रहे हैं. ये तो रिपोर्ट है DOPT की. 230 something income tax IRS officers, right? Finance Ministry officials, they have been removed from the job. You know that? Last 7 years. Terminated from the job. And what is the basis? Lack of performance. So some things, obviously, this government is doing good also, right? It's not all kahani. Everything is not jumla. So if you are not able to pass that exam, तो आपने बोला कि wisdom पे छोड़ दे. Should we leave it to the wisdom of the bureaucrat? No, that is not what administration is. We have trained him, we have selected him, right? We have nurtured this person to tackle such problems, right? Every problem will occur in a pattern. कुछ pattern होगा ना हर problem का. See, so to a large extent, most of the administrative problems that we see around us, they can be developed into a scientific knowledge. If there is a communal riot, this is a pattern. Fine, this will be the consequence. These are the vital factors which will be there involved in this communal riot. अब disaster management या disaster occurrence है, उसका भी एक pattern होगा. भाई traffic violation, traffic management उसका भी एक pattern होगा. Crowd management उसका भी pattern होगा. Fine, see, every problem can be to an extent developed or understood in the form of a pattern. उस पैटर्न का सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है? We know already कि this is the problem. Problem will occur or it will unfold this way, and this is going to be my solution. ये किया जा सकता है. That is the focus of the study of PubAd. One part of the administration study is scientific. When I say scientific or empirical, I mean simply that yes, there are problems, there are issues which could be solved by a pre-established solution. But other aspects, fine. Let us say, भाई, सोनम बेवफा हो गई, क्या करेंगे भाई? अरे, you heard the news or not? Sonam Bewafa, you've not heard the news. Fine. The husband goes on a honeymoon with the wife and gets killed. Right. He should have anticipated it or not? नहीं? He could have asked ChatGPT, भाई क्या होगा मेरे साथ? नहीं? अरे इसका आंसर भी तो होना चाहिए ChatGPT के पास. नहीं है, then it is useless for us. Fine. You are getting married, right? And you want to know exactly how this person is. So when you want to marry someone and you meet him or her, right, they are going to present their best picture. Fine? करेंगे कि नहीं करेंगे? Right? Their tone will be sophisticated, their accent will change, they will talk, मैं UPSC की तैयारी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, right? Intellectual level 0. लेकिन कहने के लिए तो है ना भाई कि I am also there in all Rajinagar preparing. Fine? Last 5 times से मेरा प्रीलिम्स सिर्फ 1 नंबर से 0.25 से नहीं हो रहा है. अच्छा, उसकी मार्कशीट देखोगे, मार्क्स उसके 20 होंगे प्रीलिम्स में, बट वो आपसे तो ही बोलेगा ना कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ. Fine? What is it? Misrepresentation. Right? So when you want to think of human behavior, can you predict it? When you are dealing with human beings, can you predict it? Let's say we understand the crowd management, right? But we could not predict how this crowd behavior is going to be. Suddenly someone in the crowd, because everything is going as per your knowledge that is there, right? Suddenly what happens? Somebody in the crowd, right, shows a video to someone, see ye kya ho raha hai, ye kya ho raha hai, ye kya ho raha hai, ye kya ho raha hai. See, suddenly they become aggressive. Now you had not anticipated it. Everything was going according to you. So SP को लग रहा था I was doing everything properly, right? Suddenly something happens, right? Now how is he going to deal with it? So should he need to anticipate something which is not there? उसको कुछ वो भी सोचना पड़ेगा जो इसमें नहीं है. You understand? That is heuristics, wisdom, experience over the time. See? So if somebody is just passing out or qualifying civil service and tomorrow opens a coaching and says कि देखो भैया मैं rank 1 हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाना हूँ, PubAd. Fine?
लेकिन मैं रैंक 1 कैसे बना? मैं तो इनसे पढ़ के बना। तो उन्होंने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, नहीं? तो अगर मैं 13 ईयर से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैंने उससे ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी मेरे पास है। फाइन, एंड आई गेव 5 years माई एफर्ट इन प्रिपरेशन, तो मैंने उस समय भी किताबें पढ़ी होंगी, राइट? दैट मीन्स क्यूमुलेटिवली मैंने उससे 15 years ज्यादा पढ़ाई की है। तो मैं कितना भी डम हूं, कुछ तो मुझे ज्यादा आएगा। Can you beat the experience? No. It's not just about number of years. I'm talking about experience in terms of intuition. Knowledge कैसे डेवलप होता है? इंट्यूशन से भी होता है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट? आप एंटिसिपेट कर सकते हो। सी, सो एज द मोमेंट यू बिकम एन IAS and you work from SDM, right, or sub-divisional level, and you go to the ADM level, and you go to the DM level, right? ये क्या है? This is your intuition development. आपको एक इंस्टिंक्ट आ रहा है धीरे 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 कि अरे यार एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा भी हो सकता है। See, now that cannot be taught. That has to be understood. And everybody's understanding level is different. Why? Because everybody started with a different set of worldview. What is worldview? You know, right? We'll encounter lot of terms. तभी मैंने कहा जो पबैट का अच्छा स्टूडेंट होता है उसका जीएस कभी खराब हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स अगर वो खराब है, दैट मीन्स वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। Is it sociology? Is it social justice? It is financial administration, economics, disaster management, environmental governance, ethics, polity? कौन सा ऐसा एरिया जो पबैट में नहीं है? The problem is you are not able to maximize the benefit. Fine, we'll come to this discussion. Now, worldview क्या होता है? What is worldview? अब see, you are one person starting from here and he is looking at things like this only. चलो भाई ऐसे चलें, चलते रहे, ठीक है। यूनिट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, चलो हो गया, फाइन, पहुंच गया यूनिट 26 पे, खत्म। फाइन, एक स्टूडेंट है, वो ऐसे भी चलता है, फिर थोड़ा ऐसे भी चलता है, यहाँ भी चलता है, वो यहाँ भी देख लेता है। Fine, and he is also moving here, but at the same time he is also moving somewhere else. He is comprehensively understanding ki how the nature of one topic, another topic horizontally कैसे link हो सकता है, vertically कैसे link हो सकता है, right? अगर मैं governance पढ़ रहा हूँ तो क्या उसको multiply कर सकता हूँ subject में भी and outside that also. If I study the theory of governance, can I anticipate certain questions in my general studies which I can solve much better than any other student? Fine. Now see, this is a linear perspective. Worldview. इसकी सोच कहाँ है? Confined in a box. But the moment you start your journey right from this comprehensive 3D perspective, 5D or 7D perspective, right? You are now suited for civil services. Why? It is looking for generalists. But journalists are not mediocre. Fine. Journalists are those people who know lot of things about lot of things. People say less about more and more. No, it's not correct. वो जर्नलिस्ट नहीं है। फाइन, जर्नलिस्ट वो है जो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है, सब कुछ नहीं जानता। Right? Now, PubAd is a subject which actually reflects that. So everything that you will study in UPSC for your preparation of UPSC, somewhere will get into direct interaction और somewhere tangential circumference पे टच होके जाएगा, या कहीं ना कहीं एंटर होगा किसमें, जो पबैड का डोमेन है। अगर मैं पबैड को बोलूं गवर्नेंस है पबैड, right? If I use the word that PubAd is not PubAd, it's governance, fine, then almost everything that you study comes under it. What does this mean? PubAd is governance. वर्ल्ड व्यू क्या होता है अभी तक बताया नहीं आपने। The way you look at things, the perceptions, the beliefs, the value system, the ideology that you have when you look at something. You study ethics and you find and you read a word called culture. Ethics पढ़ते हो ना, attitude, value system, socialization. You know what is socialization? You learn things by learning and by just not learning, both. Conscious, unconscious learning. When you see things around you happening as a child, nobody's teaching you that, right? You learn it. Then you go to university, college, schools, you learn things. Conscious learning.
फाइन, सबकॉन्शियस लर्निंग, बोथ बिकम पार्ट ऑफ योर लर्निंग, योर पर्सनैलिटी, उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, यू लर्न विदाउट नोइंग, नेबर्स, कम्युनिटी, रिलेटिव्स, संस्कारास, रीतिस, रिचुअल सब हो रहे हैं घर में, यू आर सीइंग इट, लर्निंग इट, प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी, कॉन्शियस लर्निंग। So when you talk about Indian society, paper 1, social justice, paper 2, ethics में जो value, attitude, psychology, culture जो भी आप पढ़ते हो, वो किस पे dependent है? Socialization. Corruption is dependent on what? When I say corruption, right? Have you ever thought of, you define corruption, right? Prevention of Corruption Act 1988 defines corruption as abuse of authority for pecuniary, non-pecuniary gains. That's not corruption. That's just a definition of corruption legally. तो corruption तो एक cultural aspect है, behavioral aspect है, psychological aspect. People have accepted corruption as normal, and that is why they are acting on this, right? But leave all that discussion. So when you will study PubAd, now if your vocabulary, if your understanding, right, are broadest or in a broadest comprehensive manner possible, उसी सब्जेक्ट को समझना इजी हो जाएगा। Why? Because that is the nature of the subject. The moment you just make your understanding very conservative and just to the text which is mentioned in the syllabus, that very moment your understanding will become so narrow that your understanding of questions in the exam will not be there. तो सबसे important काम हमारा क्या है as a teacher, mentor, whatever, is to give you the essence of the subject, is to socialize you to the subject. कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हैं, राइट? तो उसके लिए क्या क्या तैयारी जरूरी है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट की रील देख के खुश नहीं होना है। डोंट फेक that you are preparing for UPSC, right? Don't just show yourself that you are preparing for UPSC. You actually do it, right? And the world will know about it. Why do you have to project that I'm actually studying? नहीं, इतनी सारी किताबें हाथ में लेके, बैग्स लेके इधर से उधर भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं किसी को नहीं पता। टाइम नहीं है ना? किस चीज का टाइम नहीं? 6-7 hours of proper preparation, fine, 1 year, 1.5 year, you're young people, you're just starting, right? That is enough to crack. At least go to the interview. After interview क्या होता है, that I cannot tell, right? What has been my experience, I know that, fine. तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि क्या मत करना कि इंटरव्यू में नंबर मिल जाएंगे, right? Don't fight with the interviewer. That I can definitely tell. Fine. Don't cut what he's saying. Listen to it. Yes, sir. You're right. So it is obviously you can qualify. Mains को strong करना वैसे भी बहुत जरूरी है, because interview is to an extent unpredictable, and somewhere there are no predefined parameters for interview. Even though second ARC has given a reference that there are somewhere 18 traits on which the UPSC evaluates the civil servants. Ab 18 traits in half an hour is very difficult, I think. Like I told you, fine, you are looking for a groom or a bride. In half an hour, you are assessing somebody. Fine, after that you realize कि जो भी ये सब था, वो सब झूठ था. Just 7-8 months in Agra, right? A girl divorced her husband or sought a divorce from the husband, right? Just married, recently married, on the ground of non-hygiene. That was in newspaper. You don't read newspapers. So on the ground of hygiene, she took a divorce, and that's very logical. That's her right. Fine. United Nations has already accepted the right of women over her body. Her right for reproduction should be protected. Fine, by international conventions. Though there is no specific convention, but that comes under the elimination of discrimination, all forms of elimination of discrimination against women, CEDAW, 1978 ka law. Right? So what you will study in entire general studies, you will study in PubAd. So every optional gives you 500 marks, right? Public administration give you 750 marks, if you utilize it properly. तो ये हमारी बेवकूफी के हम उसको यूज नहीं करते जैसा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि we are in hurry. Fine, we don't know where we are going, but we are in hurry.
Fine. I want to finish my optional in 3 months. Fine. My friend, you have just finished your chances of qualifying the UPSC. और 3 months में खत्म करके कहाँ जाना है तुम्हें? एग्जाम तो 1 साल बाद ही होगा ना, कि नहीं होगा? और यू विल इन्फॉर्म द यूपीएससी की सी आई हैव फिनिश माय ऑप्शनल, एक काम करो मेरा पेपर पहले ले लो. फाइन, मुझे थोड़ा जल्दी बुला दो प्लीज, मेरे को शादी करनी है, घर वाले बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना. व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? यू कैन नेवर फिनिश द प्रिपरेशन. फाइन, ऑलवेज यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली. आप ऑप्शनल कभी कभी खत्म नहीं कर सकते. क्यों? आपको करते रहना है. See, 500 marks. For 1000 you are spending 14 months. For 500 marks you cannot spend 4.5 months. Right? Regularly. And after that at least 3 revisions you need. क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ईजी है बोलना, क्योंकि मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ. फाइन, मुझे पता है कि भाई आपको शायद नहीं समझ पाए. यू नीड 5 times to study that. So we have to take due consideration of that every student, whether he comes from humanities background or science background, most of us are people who study are engineers, right? MBAs, technocrats, बहुत सारे पढ़ते हैं. ये obvious है कि भाई उनको सारे terms समझ में नहीं आएंगे, right? So when we are studying, we study from every zero aspect. I assume that you don't know anything. Fine. Even though you have studied general studies, you tell me, most of the students tell me मैंने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं assume करता हूँ कि नहीं पढ़ा. Fine. अब इस पे आते हैं. So ये जो part है, fine. All happy for Paband. Fine. Since 2001, right? 2000 तक, 95 से 2001 तक, physics, mathematics, right? Physics, geography, physics, mathematics. You see most of the toppers, या तो engineering subject, physics, maths. They had the optional, but that does not mean it was because of that. It meant it was preferred, right? And that was also the time you will see lot of people, right? Lot of people in this time either opting physics or maths physics as an optional, most of them coming from technical backgrounds, right? Technical background के लोग बहुत ज़्यादा enter होने लगे यहाँ पे. Fine, उसका reason था. I don't know, you might have done this study or not. Fine. Here, this was the time जब .com boom start हुआ था. .com boom, you know? Fine. .com boom सुना है कुछ? अरे अभी जो वेबसाइट चलाते हो, तो 2000 में Y2K, ईयर 2000 इसको बोलते थे, और यहाँ पे बोले .com का फेलियर होगा. Fine. The clocks will have to reset to 2000. What does it mean? The entire algorithm has to be restructured. Every data would be lost. That was the idea. People said कि भाई ये .com फेलियर हो जाएगा यहाँ पे. Fine. ये टाइम है जब अमेरिका फिर से was becoming the land of enchantment. अमेरिका आओ और जीवन बनाओ. एल डोराडो है. अरे KGF तो देखा होगा, कुछ तो यार सीखो मूवी से भी. Fine. So America became that kind of attraction, and people moving. This is the era of brain drain. See, so majority of the technocrats, the intelligentsia, the elites started moving out, and many of them started opting for civil services. Otherwise, उसके पहले ये dominantly humanity centric था. दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी थी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बेसिकली DU, राइट, प्रोमिनेंटली DU था. सेंट स्टीफेंस का बहुत डोमिनेंस था सिविल सर्विसेज में. फाइन. मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस, लेडी श्री राम कॉलेज, डोमिनेंट. बट यहां से जो है वो टेक्नोक्रेट्स, बीटेक्स का टाइम आने लगा. फाइन. ऑब्वियसली यू नो बाय द टाइम 2010-11 कम्स, फाइन, बीटेक का फुल फॉर्म हो गया, भटका हुआ. Everybody was BTech. Fine. When I got the first job, so I thought कि अरे बहुत अच्छा पैकेज है, Reliance Petrochemicals. Fine. But the moment I stepped out of my, if you know about Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai. Fine. So that was the office we had.
सो वी यूज्ड टू स्टेप आउट. बाहर जो है इतने सारे लड़के बच्चे खड़े रहते थे, आई डोंट नो व्हाई. सो आई वन डे आस्क्ड देम कि भाई ये सब कौन है, वो भी इंजीनियर थे, राइट? सो आई सेड व्हाट आर यू डूइंग? डेटा एंट्री. That was a big job. In US, most of the engineers are doing what? Data entry. But they are earning in dollars. That's the only difference. Fine. So at least data entry करनी तो वहां चले जाओ. See? So you'll see कि भाई यहाँ पे decline हुआ, right? But number of engineers जो आ रहे थे वो तो कम नहीं हुआ. भाई production factory तो बंद नहीं हुई. Fine. Product की quality गिर गई. India has one of the biggest problem. It's not just lack of employment. It's lack of employability. Prime Minister's Economic Advisory Council. Fine. Indian Institute of Economic Research and Growth. Fine. But Prime Minister के सब आसपास ही reports हैं, but वो पढ़ नहीं रहे अभी interest नहीं है. It's okay. Fine. He'll read some other day, not now. So if you see this era, right? PubEd क्यों important था? So 2008 में change हुआ. 12 तक ये पेपर बहुत easy, 97 से. Boom of this paper. क्यों? उसका reason था. Like I said, lot of technocrats entering. This is a subject which does not need you to have a graduation or then it needs you to have a graduation or post-graduation, but not necessarily in any of the subjects. It is not optional centric. It's not your baggage or academic centric. It doesn't have to do anything with that. कोई भी आए PubEd पढ़ सकता है, कोई भी नेता बन सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है. फाइन. आप बीटेक हो केमिकल, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, फाइन, PubEd पढ़ लिया. फाइन. आप कुछ और हो, आप भी पढ़ लो PubEd. सी, बट ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बीटेक हूँ, राइट? मैं एमटेक भी हूँ, LLB भी हूँ, राइट? सो लॉजिक इज दैट यू कैन स्टडी द सब्जेक्ट बिकॉज इट इज फर्स्ट एकेडमिक न्यूट्रल. सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये. तो यहाँ जो पेपर है 12-13 का पेपर, राइट? यू शुड नो अबाउट इट. That why you are hearing all those rumors जो आए वो क्यों आए, ठीक है? Because as a student, as a teacher, I have to clarify that also. ये rumors क्यों आने लगे कि ये टफ है तो ऐसा है तो वैसा. These 2 years paper, fine. ये पेपर directly indirectly it was said कि भाई it was set by the Indian Institute of Management. IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad का डायरेक्टर होता था मिस्टर ढोलकिया. He became very popular. तो ये बोला गया कि ये जो पेपर्स थे इस साल के वो किसी ना किसी एक्सपर्ट जो IIM अहमदाबाद के उन्होंने सेट किया, राइट? ये पेपर्स कैसे बने? मैनेजमेंट सेंट्रिक एंड स्पेशली पेपर 1. सी, इजी है टफ है उसका परसेप्शन सिर्फ पेपर 1 है, क्योंकि पेपर 2 तो इट सीम्स टू बी मोर और लेस फेमिलियर. पॉलिटी पढ़ा, गवर्नेंस पढ़ा, चलो भाई आता तो है, आप लिख पाओ ना लिख पाओ, दैट्स अ डिफरेंट इशू. एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड इट. फाइन. यू कैन नॉट से कि सर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या है मैं समझ नहीं पाया पेपर में, नहीं ना. लेकिन अगर ह्यूरिस्टिक्स आ गया तो यू कैन से कि मैं समझ नहीं पाया. व्हाट इज इट? दैट्स द प्रॉब्लम. सो दिस मैनेजमेंट ओरिएंटेशन पेपर, राइट, इट बिकेम ऑब्वियसली टफ बिकॉज यहां तक जो हम पढ़ रहे थे वो कैसे पढ़ रहे थे? द ट्रेडिशनल मॉडल, राइट? वी न्यू देयर इज पार्ट ए, देयर इज पार्ट बी. पार्ट ए विल हैव 6 यूनिट्स कमिंग, पार्ट बी विल हैव 6 यूनिट्स कमिंग, राइट? पेपर 2 में 14 यूनिट्स हैं, पार्ट ए 7 यूनिट्स, पार्ट बी, ये डिवीजन है. मोर और लेस दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. इसके अराउंड ही क्वेश्चन पेपर आएगा. अब वो नहीं आया, राइट? जस्ट लाइक दिस ईयर मेंस नहीं आया वैसा, राइट? 2 years बैक जो प्रीलिम्स नहीं आया वैसा. क्या करेंगे अब? नाउ वी कैन नॉट ब्लेम द बुक दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. नहीं, इट्स अ लॉजिक. गवर्नमेंट्स आर डूइंग द बेस्ट वर्क. फाइन. बहुत फेमस सेइंग है. Governments always do the best work, but they are not our governments. नहीं, हमेशा दूसरी गवर्नमेंट लगती है कि अच्छा काम कर रही है, राइट? द सेम वे ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आर समवन एल्सेस वाइफ्स. तो ये तो प्रॉब्लम है. यही गवर्नमेंट के साथ भी है. अभी अरे उस स्टेट में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहां तो हाईवे बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? फाइन. सेम चीफ मिनिस्टर वहां चला गया तो वहां अच्छा काम हो रहा है, राइट? वो यहाँ काम कर रहा है तो नहीं कर रहा. परसेप्शंस. सो इट इज ऑब्वियस कि ये जो पेपर आया इसने क्या किया? परसेप्शन बना दिया कि अरे मेरा बहुत टफ आया, फाइन, वर्सेस बाकी सब. सी, द पेपर्स, द सब्जेक्ट्स व्हिच जनरली नो वन वाज इवन स्टडिंग कि भाई ये है क्या कंटेंट, फाइन, वो सब्जेक्ट्स धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे. क्यों होने लगे?
The reason was the perception which was developed कि भाई ये tough आता है, fine, ये easy आता है. I never knew this idea, fine, unless I met few of the students who said कि सर ये tough आता है, ये easy आता है. मैंने कहा यूपीएससी क्या है, tough है easy है, पहले ही बताओ भाई. यूपीएससी tough है easy है, मत करो. फिर किसने बोला मत करो भाई? somebody is forcing you to do UPSC, right? Did your father send you a gun point कि बेटा मैं जानता नहीं हूँ कुछ, वापस बताना? फाइन, इसीलिए मैं गया नहीं. देखो फाइन, आई केम टू दिल्ली, यहीं रह गया क्योंकि उन्होंने बोला था बिना बने मत आना. मैं गया ही नहीं, बना ही नहीं तो गया, जाता कैसे है? इट्स नॉट लाइक दैट. सी, अब वो टफ है या इजी किस पे डिपेंड करता है. फाइन, आप कहाँ से देख रहे हो? आप एक 12th क्लास के बच्चे हो, आप बोलोगे हाँ भाई ये यूपीएससी, right? But if you see that 11th and 12th class bacha who is giving IIT JEE, fine, he is much smarter than you who is giving UPSC. You are nothing in front of him. एक 17-16 year old का बच्चा जिसकी maturity level इतनी high है, fine, you cannot even crack one question in that paper, fine, he has to at least solve 8 to 15 questions, तब वो select होगा. तो अगर आप उससे compare करते हो खुद को, तो आपकी मेहनत तो कुछ भी नहीं है इस एग्जाम के लिए. Half of the exam is based on narrative. Half of the exam. क्या narrative है? Oh, women centric development. I'm telling you, these are the cheat codes, right? आप social justice पे कोई भी आंसर लिखो और नीचे डालो. The government of today, right, is highly focused on women centric development. For example, the gender budgeting introduced in 2014 में सब इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? हर चीज आपको 2014 ही लिखना है, फाइन, राइट? नहीं, अच्छा तुम 13 लिख सकते हो, लिखो, कोई बात नहीं. इफ यू डोंट गेट द मार्क्स डोंट ब्लेम मी, फाइन, 13 वाले को नंबर नहीं मिलेगा. सो आपको लिखना है कि भाई अगर ये लिखना आपने लिखा, सी योर आंसर बिकम्स होलसम, एज सिंपल एज दैट, राइट? बट एक आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करने वाले बच्चे का ये फायदा नहीं हो सकता, फाइन. उसको पता है कि भाई इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा, वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मैं कैसे इसके components निकालूंगा. See, it's tough for them. So if you are the student who has prepared for it, or if you are the people who understand that competition starts right at a very young age, none of you can say कि ये tough है या easy है. Fine, the proof of pudding is in the eating. जब तक आप उसको करोगे नहीं, आप नहीं बोल सकते. ये बहुत बड़ा perception built हुआ, right? उसके बहुत सारे factors हैं, ये नहीं कि नहीं है, तो बहुत फैक्टर्स है, कमर्शियल फैक्टर्स हैं, राइट? कुछ एकेडमिक फैक्टर्स में डेफिनेटली. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्फन सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी में, उसकी कोई एकेडमिक लॉबी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की है. सो अगर यूजीसी बोलता है कि भाई इफ यू रिमूव ऑप्शनल फ्रॉम द एग्जाम, राइट, व्हाट विल हैपन टू दिस, राइट? द एंटायर स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ है इतना बड़ा यूजीसी, फाइन, ये कैसे काम करेगा भाई? क्यों? क्योंकि ऑप्शनल तो चाहिए. Why will people opt for those subjects in the universities? Unless they have some value for them later for their employment, right? At least civil services. Civil services is the most sought after career. So बच्चे first year से पढ़ते कि मुझे IAS बनना. Fine. If you detach it from that, what will happen? The entire glamour of studying humanities, or for that matter certain subjects, will be lost. हर कोई बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, किसी तरह इंजीनियरिंग करो और यूपीएससी दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग किसी भी तरह हो सकती है. आई एम नॉट टेकिंग दैट यूनिवर्सिटीज नेम, बट सी यू गो टू वेस्टर्न यूपी, फाइन, यू जस्ट हैव टू से कि भाई बीटेक चाहिए 55% वाला, अच्छा ठीक है, फाइन, यू विल गेट कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि भाई सीसेट आई कैन क्वालिफाई, आई एम इंजीनियर. If the UPSC brings out the actual report, then most of the engineers would have failed in CSET. सबसे ज्यादा फेल होने वाले वही होंगे, ये ऑब्वियस है. फाइन, तो a+b² जानने से जो है वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं होता है. तो ये फैक्ट है कि भाई ये एक परसेप्शन बिल्ड हुआ. क्यों हुआ? ये फैक्ट था, ये पेपर्स ऐसे ही आए थे, नो डाउट. एंड वी सॉ अ डिप इन द मार्क्स, फाइन. बट इस परसेप्शन, क्योंकि बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेकिंग दिस सब्जेक्ट, राइट, दे हैड टू कम आउट ऑफ दिस डिसबिलीफ कि भाई ये पेपर ऐसा क्यों आया. देयर वाज नो सोर्स ऑफ स्टडी, राइट? दिस द एरा, द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड टीचिंग,
right? 5 of my students qualified, one got the highest. Uske highest kitna tha? 235. Imagine. Ashish Pal, rank 625, 206 marks in interview. IITS. Fine. अगर उसको 50 नंबर और मिलते हो टॉप में होता 206 marks in interview. He left IITS obviously after 2 years. Fine. So Amandeep Jaku उसी साल. Right? बहुत सारे स्टूडेंट निकले. सी ऐसा नहीं कि नहीं, स्टूडेंट्स गॉट थ्रू, बट डेफिनेटली स्कोरिंग क्यों होता? क्यों? बिकॉज वी ऑल हैड अ परसेप्शन कि ऐसा ही आएगा, बट वैसा नहीं आया. राइट? देन समबडी सेड कि देयर इज अ हिडन सिलेबस. यस, if you go back and search on the Google ki what was hidden syllabus for UPSC, right? So many of the teachers who were there then teaching, they came with the argument ki there is a hidden syllabus. Fine. The only problem was where to find that hidden syllabus. Fine. वो treasure map कहाँ से मिले? Fine. तो हमने दरवाजे खटखटाए. We started teaching. I said कि भाई खटखटाओ दरवाजे, कहाँ से मिलेगा मैप? Then somebody said it's a UGC GRF paper. Fine. Somebody said अरे ये PG पेपर है. Somebody said अरे ये UK सिविल सर्विसेज एग्जाम से कॉपी किया हुआ है. Yes. Now see, that was the problem that created panic. It was not made out of anything. There were 3-4 books which they largely referred. One was Stephen Robbins, right? There is a part called Organizational Behavior that you study in PubAd, right? A good book is written on that called Stephen Robbins' book, Organizational Behavior, OB. Majority of the questions वहां से उठा के इसमें दे दिए, right? उस समय हम students या जो भी थे वो पढ़ते थे क्या? प्रसाद and प्रसाद. If they are very intellectual and have some little better understanding, he will read Mohit Bhattacharya. Mohit Bhattacharya had 4 books, not just one that you see here, right? It has 4 books. Restructuring Public Administration, Contemporary Public Administration, right? And Public Administration, जो आप normally पढ़ते हो. So it had a lot of books. Now obviously a student will not read all of that books, right? उन्होंने वहां से questions pick up किए. See, so what they did, because as far as my logic says, they had exhausted the sources of developing questions. क्योंकि अगर वो straight forward questions भी बनाते तो कहां से बनाएंगे? ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो रोज रिसर्च हो रही है उसमें. Fine. If they have to borrow the academic knowledge, they have to borrow it from where? The Europe and America. India is not doing any original research in public administration. You will find scholars of political science, not of public administration. So all the original, most of the original work, now there are, most of the original work, right? Because I'm talking about almost 10, 15 years later today. Most of the original scholars were contributing from American perspective. तो एक इंडियन स्टूडेंट के लिए, फाइन, क्योंकि सी यूपीएससी इज नॉट कंसिडरिंग दैट कि भाई हाउ विल इंडियन एस्पिरेंट, एक इंडियन स्टूडेंट कहां से लाएगा ये सोर्स? He's not going to read IIP, Indian Institute of Public Administration, entire journal. He's not going to read AJP, American Journal for Public Administration. क्यों? Plus वो यूनिवर्सिटी में PubAd पढ़ता ही नहीं है. If he was studying in PubAd in university, right, he would be getting access to these resources. तो कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एडवांटेज मिलने लगा. Who? Delhi University and JNU. Some BHU students, Jamia students, they started getting advantage in this. Because they had access to those content. लेकिन जो कमर्शियल मार्केट है वो किससे बनता है? माइनस ऑल दीज स्टूडेंट्स. तो इंजीनियर्स आएंगे, एमबीएस आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे. कहां से? आगरा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वहां से लोग आ रहे हैं. तो व्हेन दे कम टू ओल्ड राजेंद्र, राइट, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि भाई उनके पास तो ये एक्सेस नहीं है, राइट? And when they look at the question paper, they might say, because they never anticipated कि भाई I will go and read Stephen Robbins. Why will I read Stephen Robbins? Fine. अगर लोग बोलते हैं, बुक शॉप वाला बोलता है कि अरे भाई ये 2 किताबें पढ़ लो, he is the best mentor, no? There were some. If you go to JNU, you go to Bedsarai, IT Delhi. Fine. So there were Majumdar brothers, 3 brothers. They were much intelligent than the teachers who were teaching. They knew each and every book that was essential to be read in any of the optionals. सब पता था उनको, right? They are there still. If you go, right, Jawahar Publishing, if you've seen the books, fine, Majumdar brothers, very popular.
तो लॉट ऑफ IITians एंड JNU स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो देयर एंड आस्क फॉर बुक, ठीक है, बट फिर भी चलो आपको बुक सेलर ने बोला कि अरे ये तो इसका टफ है, ये पढ़ो, ये आसान है, फाइन, इसमें इजी पेपर आता है, देखो नहीं इसमें वेबर आता है, अरे इसमें डायरेक्ट तो केजरीवाल आते हैं सीधे, ये पेपर इजी है, इसको पढ़ो, फाइन, इज इट सो? इट इज नॉट सो. So there became a disconnect, right? Over the time एक disconnect लगने लगा कि हाँ भाई जो पूछ रहे हैं, whatever they are asking and whatever we are trying to write or whatever resources we have accessible, that is not enough to justify the question. So drawback क्या हो गया कि बच्चों ने अपने sources को diversify नहीं किया. Fine, एक बहुत बड़ा lot था जो पीछे teachers थे. Fine, I'm talking about commercial teaching, I'm not talking about academic teaching. There were a lot of good scholars, no doubt, right? तो ये जो academic baggage commercially चला आ रहा था, they did not change their patterns, they did not evolve themselves, they were teaching the same content again and again and again. तो 2-4 साल में it started feeling कि भाई this question paper and what we are studying are different somewhere, right? But ऐसा नहीं है, see, even then also, lot of students got marks, right? बहुत marks आए, ऐसे नहीं, but yes, the number started shrinking. उसके भी रीजन थे, एक ऑप्शनल होगा तो नंबर्स वैसे ही कम हो जाएंगे, इफ द ऑप्शनल वुड नॉट बी इन प्रीलिम्स नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे, फाइन. और अगर ये लगने लगे कि ये ऑप्शनल थोड़ा टफ है कंपेयर टू ये बाकी ऑप्शनल इजी हैं, फाइन, इट्स लाइक द सेम थिंग कि आई विल वर्क मोर ऑन इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बट लेस ऑन गवर्नेंस एंड दिस पार्ट, क्योंकि ये टफ है. लॉजिकल सी पबेड आप ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, पढ़ना तो ही आपको. तो जो थोड़े स्मार्ट कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पढ़ना तो है, राइट? सो व्हाई नॉट लेट्स मल्टीप्लाई दी आइडिया. सी 290 मार्क्स, 287 मार्क्स, 274 मार्क्स, 301 मार्क्स, राइट? लास्ट 3 इयर्स बहुत बच्चों का है, बहुत बच्चे मतलब जो टॉपर्स बच्चे उनके हैं 260 भी आए, उस पर भी टॉपर है करिश्मा, रैंक 14, राइट? शी वाज अ स्टूडेंट इन 2020, उसके रैंक 14 आई, शी गॉट 266 मार्क्स. बट उस साल जो टॉपर थी और भी ऑप्शनल से, आई थिंक विशाखा वाज पॉल साइंस टॉपर, राइट? उसके 269 267 मार्क्स थे. सो यूपीएससी इज नॉट क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड कि यू हैव टू गेट 300 ओनली देन यू कैन टॉप द एग्जाम. दैट परसेप्शन हैज बीन मेड बाय अस, that has been made by coachings. If you get 260 275 marks, right, it's a decent mark, it's a very good mark considering the overall scoring is reducing over the time. Overall score क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है. पहले 56%, 58%, 55% पर रैंक 1 होते थे, अब 48% पे, 49% पे, 51% पे रैंक 1 आ रहा है. तो स्कोरिंग पैटर्न ओवरऑल कम हो रहा है, राइट? तो पहले जो 330 आते थे, 340 आते थे मैथ्स में, जैसे दे कैन गेट, फाइन, बट ओनली फ्यू, ऐसा नहीं कि सबको, फ्यू कैन गेट. बट यू सी देयर डिसएडवांटेज इन अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज दे आर स्टडिंग मैथ्स, दे हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट. रिविजन में ही ऑलमोस्ट 2-3 महीने लग जाएंगे, फाइन. तो वो जो एफर्ट है और वो जो गेन है वो होता नहीं है. इवन इफ दे गेट 325 इन मैथमेटिक्स, राइट, बट देन दे गेट 100 इन ethics paper, maybe 95 in governance paper, but because of that maths they can pull it off. But you see the amount of effort they will have to make. उतने में अगर कोई और ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है तो आप बहुत टाइम बचा सकते हो. एंड इफ यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, नथिंग लाइक दैट, राइट? सम पीपल हैव फ्लेयर फॉर राइटिंग, ऐसे लिखना ही पड़ेगा, व्हाट टू डू. सो ये जो टाइम है ये थोड़ा सा डाउटफुल था, बट यू सी 2017 ऑनवर्ड्स, सी. बट ये जो 5 साल का हिस्ट्री है, राइट, दैट इज व्हाट इज बिकॉज डिजिटल मेमोरी जो होती है ना, इट कीप्स मूविंग, सी. सो दैट गोज ऑन कि अच्छा अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा. अगर ऐसा होता, एक क्वेश्चन बताओ, इफ सम ऑप्शनल्स आर सेड टू बी गुड, राइट, देन ऑल ऑफ everybody who is a good student, there are a lot of good students opting that optional, why not all of them are qualifying? Is it the optional or is it the way you study the optional? See, that's the difference. So this is not the era pre-2010. Like I said, every Tom, Dick, Harry was qualifying. Why it was so? Obviously, nobody was stupid. If they were qualifying prelims, they were not stupid. But the problem was that कि उस समय क्या था कि भाई 2 optionals थे. We had to have one optional which was
which seem to be simple, easy, or at least could be fast-tracked while studying. That was a necessity. Why today that is not a necessity? So a lot of people will prefer, I have studied this in my graduation, so I will study it. See? Now it also depends how have you studied that in graduation, may be important. Did you even study in graduation? So question mark है. तो देखो competition की preparation बहुत अलग level पे होती है. If you start it at the level where it is needed, fine, definitely you will end up where you actually wanted to be. तो selection का process जो है, it's not linear process. It depends on many factors. Public administration is one of the most fundamentally, right, entertaining, engaging optionals, provided you understand the nuances. You understand nuances, the undercurrents. उसका जो underlying ideas है वो समझ में आए. ठीक है? तो subject लेने के लिए पहले तो बधाई हो, है ना? You are congratulated for taking one of the best options. And mind you, you will realize it once we finish the classes. Right? I'm not going to tell it. Right? You yourself will say it. How you have transformed the entire UPSC preparation, not just this optional. Learning is a transformative experience. Right? अगर तुम्हारा brain evolve हो रहा है, तो वो हर चीज के लिए हो रहा है, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं हो रहा है. So public administration थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज. Right? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. Fine? क्योंकि आज आपको सोचना है जाके. ठीक है? ये सोचना है कि पवेट बहुत अच्छा है. And it is, right? I'll prove it, don't worry. And you can get marks. See, if a student, see, Dipesh got 290 marks, there is Ashutosh, he got IPS 287 marks, right? Kushali got 274. Chalo, bahut sare. I'm not talking about these people. I'm simply saying, if they can, when I've seen their writings, I've evaluated them, fine. Why can't people score? People can score. But कुछ डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और वो हर जगह है. अगर आपको GS4 में नंबर लाने, कुछ स्ट्रैटेजी है, फाइन, नॉट जस्ट टेम्पलेट, कुछ स्ट्रैटेजी है. टेम्पलेट्स आर नोन बाय एवरीबॉडी, नहीं भाई, सबको पता है अब तो टेम्पलेट है कि नहीं. पेस्टल, राइट, स्टेम मॉडल, पेस्टल मॉडल, ये मॉडल सबको पता है. हु डजंट नो ऑल दिस? फाइन. सो अब थोड़ा उसके ऊपर भी जाना पड़ेगा. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस सिलेबस, फाइन, इफ यू रेड दिस सिलेबस, यू सेड मॉडरेट है, फाइन, ठीक है, बहुत अच्छा है. चलो हम स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल चीज से. फाइन, वी हैव 2 पेपर्स. दोनों में कॉमन क्या है? सो लॉजिकली कॉमन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन. व्हेन यू लुक एट दिस फर्स्ट यूनिट ऑफ पेपर 1, राइट, लेट्स टेक सिंपल थिंग्स टुडे. सो वी हैव 2 पेपर्स. We look at the first unit of this. The first unit of paper 1, 40% of this year's paper is 1 unit. 40% paper. Have you seen the question paper of this year? Obviously, you should not see it, right? Kishore, good यार, common sense बताया वो administration. एक बच्चे ने बोला. So, if you look at this paper, first unit, 40% questions हैं. अब imagine if a student is lucky and smart, अगर उसको पता है कि भाई ये यूनिट सारा कॉन्सेप्ट है. If I have to understand the entire PubAd, I have to know this, right? It is like the vocabulary of public administration. Any term, any idea that I'll use later is visible here. तो अगर मुझे ये नहीं आता है, तो मुझे टेक्निकली PubAd नहीं आ सकता. अब इतना सिंपल सा लॉजिक है. सी, इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. सी, तुम जाके पूछो, ज्यादातर जो भी है, I don't want to take all their names. Fine, fine. You go and see their notes. You ask them, ask the students who are studying with them. Fine. Most of them will start teaching from unit 2. क्यों भाई? क्यों? I don't know what is hypotenuse. I don't know what is perpendicular. But सीधे मुझे पाइथागोरस थ्योरम रटना है भाई, सीधे खत्म. A plus B square क्या होता है बता? खत्म. सर टेलर ने सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उसने ये कहा था. अरे यार, यू डोंट नो द लॉजिक. You don't understand the difference between management and administration. You don't understand the difference between government and governance. And you are talking about Weber, Foley, right? तुम्हें पता ही नहीं कुछ. Fundamental error. ये बहुत बड़ा error है, छोटा नहीं है. Fine, इसको हमने rectify किया, इसलिए हमारे बच्चों के मार्क्स आते हैं. But ये fact है कि obviously उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.
You have to work very hard. You take this first unit, right? इसमें पहला word क्या है? Evolution. Right? Meaning, scope, significance, definition, and evolution of the discipline or its status still present. Fine? चलो यहाँ से शुरू करते हैं आज. I'll not teach anything. I'm just helping you understand what is the logic, meaning of, let's say, public administration. Fine? What do you understand by meaning? मीनिंग का मीनिंग क्या है भाई? हाँ, देखो हमारी क्लास देखो होती है बहुत रिगरस, very rigorous intellectually. Fine. That is why I keep telling my students, don't be serious, be sincere. Fine. क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी सीरियस हो और हम इतना रिगरस पढ़ेंगे तो तुम बाहर जाते ही मुझे गाली देने लगोगे, ऐसा मत करो. नहीं दोगे? अच्छा, तो अंदर से ही दे दो फिर यहीं बैठ के, है ना. Fine. Seriousness is not going to pay. Sincerity will pay. Fine. Seriousness सिर्फ दिखावा है. Sincerity is action. Right? अगर मैं बोलता हूं मीनिंग का मीनिंग क्या है बताओ. मीनिंग ऑफ फॉर्मेट इज व्हाट डज इट मीन? हाउ डू यू ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ समथिंग? ओके किशोर, एनीबडी लेट मी नो. कॉन्सेप्ट बिहाइंड द थिंग इज मीनिंग. ओके फाइन, श्रेष्ठा करेक्ट, नो डाउट. कम फ्रॉम, यस करेक्ट. ओके सोर्स. ठीक है, अब मैं एक वर्ड लिखता हूं, ठीक है, सिंपल वर्ड. मीनिंग, देन आई यूज अ वर्ड, लेट अस से ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, फिलॉसफी स्टूडेंट्स भी पढ़ते होंगे. In ethics you might be studying. Now there are two words. अब ये तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है. फाइन, ये एथिक्स में आता ही आता है. इफ यू स्टडी एथिक्स, हैव यू स्टडीड एथिक्स? हु हैज स्टडीड एथिक्स? एनीबडी? अब यू आर कंफ्यूज कि बोलूं ना बोलूं, है ना. कुछ पूछेगा तो नहीं. पूछूंगा तो मैं जरूर, खैर वो तो कोई बात ही नहीं. नहीं पढ़ा, सही बात. एपिस्टेमोलॉजी, राइट. एथिक्स के 4 ब्रांचेस होते हैं एज अ सब्जेक्ट. One is called epistemology, fine. Other is called meta ethics, then normative ethics, pragmatic ethics. ये 4 classifications होते हैं ethics के. Fine. Epistemology जो है, it is search for the philosophy. जो भी word, जो भी concepts हम use कर रहे हैं, उसके पीछे ideology, philosophy क्या है. जैसे आपने बोला justice, fine. तो अगर मैं बोलूं justice चंद्रचूड़, ये है उसका मीनिंग. Fine? तो क्या है फिर मीनिंग? इफ आई से जस्टिस, उसका मीनिंग क्या है भाई? विल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कम ऑन द सेम पेज जो मैं बोल रहा हूं. राइट? यू माइट से ओ जस्टिस मींस फेयरनेस, जस्टिस मींस इक्वालिटी, राइट. जस्टिस मींस गिविंग ड्यू which is something to you or something to someone, right? Making things transparent, ये जस्टिस हो सकता है, राइट. डिलीवरिंग जस्टिस टू पीपल, ये हो सकता है मीनिंग, राइट. वो कैसे पता चलेगा वो क्या है? सी, एपिस्टेमोलॉजी. सो इफ यू आर एन ऑटोक्रेट, लेट्स से तुम हिटलर हो और तुम बोलते हो देखो भाई मैं चाहता हूं पावर लोगों तक जाए, चलो लेट्स से ही सेज कि पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हिटलर का मीनिंग ऑफ पावर कुछ होगा ना भाई. बट गांधी बोलते हैं मैं चाहता हूं पावर सबके पास जाए. विल दैट बी डिफरेंट? पावर तो पावर ही है, राइट. तो ये क्या करता है? ये पावर को डिफाइन करता है और ये पावर के सेंस को डिफाइन. यू अंडरस्टैंड? दैट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. व्हाट इज द सेंस, व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल रूट ऑफ समथिंग. तो अगर तुमने बोला मैं विकास करना चाहता हूं, किसका? देश में 2 ही लोग हैं, है? राहुल गांधी न्याय देना चाहते, किसको भाई? पहले कांग्रेस को न्याय मिलना चाहिए, नहीं कि भाई हमें भी न्याय दो, छोड़ो, छुटकारा दिलाओ भाई, है. फाइन. सो लॉजिकली व्हेन यू से कि भाई मुझे आई वांट विकसित भारत, राइट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, भाई क्या सेंस है उसका? आपको जैसी सेंस पता चलेगा, यू नो द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, you will know all the dimensions.
बिकॉज आपको सेंस पता चल गया, राइट? अब आपको पेस्टल और एस्टल वेस्टल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको डायमेंशंस पता है. You'll understand what justice actually means, what welfare is. See, and if this is the idea on which we build something, understanding, right? You see the question paper, it will be a cakewalk for you. Right? तुम्हें लगेगा नहीं कि ये पबैट का पेपर है, तुम्हें लगेगा कौन सा पेपर है भैया, है किस चीज का पेपर है? मेक इन इंडिया का पेपर है भाई. पेपर इंडिया में बना हुआ पेपर भाई, मेक इन इंडिया. थोड़ा जोक भी समझो यार, है. You are born to be collector or what? Collectors are very smart people. They have to tackle a lot of things, right? Today's collectors are not bhodus which were there earlier. नहीं कि मैं देश सेवा के लिए आया हूँ, सेवा के लिए आया हूँ, सेवा. देश क्या है? मेरा घर, है ना. लोग कौन है? मेरे रिश्तेदार. नहीं तो बिहार IAS, the women, what's her name? पूजा सिंगल. हाँ, फाइन. सारे मेरे घर में सब गरीब हैं. सो सारी पॉवर्टी उसने एलिवेट की अपने घर के अंदर. फाइन. चाचा मामा ताऊ, उसका भी चाचा, उसका भी मामा, उसका भी ताऊ. इज दिस व्हाट यू आर ट्रेन्ड फॉर? कुछ तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर भाई. फाइन. तो ये फैक्ट है कि जब आप समझोगे देन यू विल रियलाइज कि ओके फाइन, दिस इज व्हाट एग्जामिनर इंटेंड्स टू आस्क. सी दैट वेरी मोमेंट जो आपका गैप है वो खत्म हो गया. तो एपिस्टेमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का कि मीनिंग ऑफ पॉवेट क्या है भाई, ये पता चलना चाहिए. लेयर लेयर लेयर, कितने लेयर्स जाना है ये भी इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली यू आर नॉट अ रिसर्चर, आप स्टूडेंट हो, राइट? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन एस्पेक्ट्स, दैट इज इनफ. एग्जामिनर डजंट वांट यू टू बी अ रिसर्चर. एटिमोलॉजी क्या है? उस शब्द का डेफिनेशन, शब्द का सेंस, शब्द का डेफिनेशन. समझ में आ गया? तो जैसे मैंने बोला ओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मीनिंग है? बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं इसके. कैसे? सो पहले आई ट्राई टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस वर्ड, राइट? कि भाई ये वर्ड कहां से आया? चलो फ्रेंच से आया. पब्लिक लैटिन से आया, पब्लिकस, राइट? ऑब्वियसली ये इंग्लिश वर्ड है बट स्टिल मैं इसका कुछ हिंदी मीनिंग्स भी ढूंढ रहा हूं सोर्सेज. तो मैंने कहा वो कौटिल्य ने बोला जन, जनपद, राइट? जन देश, जन लोग, राइट? शायद वहां से आया वर्ड. इट इज हाउ वी आर एबल टू एंटिसिपेट. अब तुम एक स्टूडेंट हो, तुम जाते हो बुक खोलते हो, कौन सी किताब खोलते हो? जो शर्मन सड़ाना, चलो फॉर एग्जांपल, अवस्थी एंड महेश्वरी, somebody told you, राइट? और इग्नू की बुक, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट. फाइन. अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, ओ इज पब्लिक इंटरेस्ट द राइजन द यात्र फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फाइन. अब तुम्हें लगा मैं गलत ऑप्शनल के पेपर में बैठ गया हूं. फाइन. बार बार तुम वेरीफाई करो ये पबैट लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है. इनफैक्ट यू आर आस्किंग एग्जामिनर कि सर प्लीज जाओ सर बदल के ले आओ ये पेपर. क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट थिंक अबाउट इट. आपने सोचा कि ये रटना है भाई, चलो यही तो आता है. नहीं. फाइन. नॉलेज इज मोर इंटरप्रेटिव एंड इसीलिए ये कॉम्पिटिशन है, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है. That is why you are getting trained for it. No, why you are spending so much of time, money, whatever, right? So इसका ये भी सोर्स हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, right? Based on that मैं इसकी मीनिंग निकाल सकता हूँ. See, so let's say I break this word public plus administration and I try to find the root कि भाई इसका क्या root है. So public का root, when I look at various sources of knowledge, I find out कि public का meaning है वेरिड मीनिंग्स है. एक मीनिंग पब्लिकस से आता है, लोग, कलेक्टिव, लेकिन वो बेसिकली क्या है? पावर. पॉलिटिकोज, राइट? द वर्ड पॉलिटिकोज रेफर्स टू पावर और अ सिस्टम ऑफ पावर. हु क्रिएट्स दिस सिस्टम ऑफ पावर? वी, पब्लिक. राइट? या रोमन या ग्रीक रेस पब्लिका. सो रोमन रिपब्लिक में दो स्फीयर्स बनाए गए, एक प्राइवेट स्फीयर, एक पब्लिक स्फीयर. व्हाट इज प्राइवेट स्फीयर? द इंडिविजुअल राइट्स. फाइन.
Now, so when I look at these ideas, I would say कि अच्छा ठीक है भाई, पावर वन सेंस हो सकता है, पब्लिक दूसरा जो आप जानते हो, पब्लिक इज कॉमन पीपल, भाई जनता है, भाई जिसको कुछ नहीं, जो कुछ नहीं जानता है वही जनता है. दैट्स द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ जनता. जब कुछ जानता है नहीं जानता है, खत्म. Fine. So this janta, citizen, you are common people, right? Obviously, this public or this power or these common people, right? What do they represent? हमारी society, right? Society का sense ही है collective. ये जो भी terms मैं लिख रहा हूं, ये सारे dimensions explore करता है UPSC when they ask question. Fine, because we stick ourselves to only one aspect, right, or one type of meaning, we lose the essence of the subject. आप कुछ भी पढ़ो, fine, जो भी subject ऐसे implied होते हैं, उसको आपको layer by layer explore करना होता है. तो collective society, common people, power. तो public का sense क्या हुआ? जो भी system either by them और फॉर देम जो काम करता है वो है पब्लिक. व्हाट इज दैट सिस्टम? कौन सा सिस्टम है जो इनके लिए काम करता है या इनके थ्रू काम करता है या इनके बिहाफ पे काम करता है? विच इज द सिस्टम? करेक्ट, यू आर राइट. व्हाई आर यू सो स्केयर्ड? स्टेट. सो पब्लिक वर्ड व्हेन इट कम्स, पावर है, एक इंप्लाइड मीनिंग है कॉमन, फिर सोसाइटी, कलेक्टिव, राइट, और टेक्निकली स्टेट. So the word public here would mean state. Fine. Though these are also the dimensions of this word. So state is visible through what? Like you said, अब simple words में हम बोल देते हैं चलो भाई government, right? State. Fine. Even though it is not same. So state has executive, legislature, judiciary. Executive is supposed to be government. ठीक है? चलो let's simplify it. So you'll understand these terms, how we'll go. राइट, हम हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे तब लिखेंगे, डोंट वरी. अनलेस यू अंडरस्टैंड विल नॉट राइट. सो इफ आई से स्टेट हैज थ्री पार्ट्स, legislature, executive, judiciary, right? That means if I want to simplify from here कि भाई what exactly public would mean, state, in the state what exactly it would mean, executive में दो parts हैं, correct. Two types of executives are there. इसको political भी बोल सकते हो, political and administrative, right? You can also say non-permanent या temporary, correct, permanent, and this is the drawback, but still this is the feature. So permanent executive are administrators. अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, इफ यू सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स मेक इट इंडियनाइज लिटिल बिट. ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है. यू लुक एट प्रैक्टिकल एग्जांपल लो. यू गो टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेयर डू यू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, माय फ्रेंड्स? फाइन, ऑनलाइन वाले सो के देख रहे हैं, लेट के देख रहे हो, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया. फाइन, दिस इज द लिबर्टी दे हैव. सी टीचर कैन नॉट, राइट? मुझे तो भौंकना ही भौंकना है, राइट? बताओ. सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे स्टेट मेंशन्ड है? You must be knowing. 5. India, that is Bharat, shall be union of states. बिल्कुल सही है. पर वो स्टेट और ये स्टेट सेम है. आदित्य, आर्टिकल 12, करेक्ट. अच्छा, ही सेइंग नो सर, आई एम नॉट स्लीपिंग. अब अच्छी बात है यार, कुछ तो इज्जत रखनी चाहिए. फाइन. सो आर्टिकल 12, राइट, करेक्ट. If I say Article 12 defines state, fine, it defines state for the purpose of what? Fundamental rights. For part 3, it is defining ki state kya hai, right? Because people's liberty has to be protected from encroachment by the state.
So if your individual rights have to be protected from the encroachment by the state, it has to be protected by whom? Judiciary. So we have to define कि state क्या है, right? State क्या है यहाँ पे? Union legislature and union executive. Are you able to understand? Article 12 में जो लिखा है वो बोल रहा हूँ. Union legislature and union executive. State legislature and state executive. Local bodies, boards, commissions, XYZ, and any other organization enacted or declared by parliament by law. So if these are the features or if these are the institutions, they are to be considered as state. अब यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल लॉ जो हमारे पास है, कौन सा यूनिवर्सल लॉ है? यूनाइटेड नेशन. वो भी डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होता है इन जनरल, राइट? बट वो बहुत लीगल डेफिनेशन है, राइट? वो बोलता है स्टेट कौन है भाई? जिसकी टेरिटरी हो. It's basically a definition of state for the international law perspective. This is the definition of state for the fundamental rights. The same definition is visible in part 4 as well, DPSP, correct? Article 36. वो भी डिफाइन करता है स्टेट क्या है, बट दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. चलो ये इंडियन पर्सपेक्टिव है, प्रैक्टिकली हम इसको समझ रहे हैं, बट डेफिनेटली व्हेन वी डिफाइन स्टेट we are saying legislature and executive, right? अब यहां पे हम जब बोल रहे हैं तो हम उसको और नैरो कर रहे हैं कि state consists of all three, but for our purpose of understanding, right, whenever we are referring to states monopoly over development, अगर हमने वो टर्म यूज किया तो हम किसको रेफर कर रहे हैं? इसको या इसको? इसको. So we are referring more to executive, right, than to all of them together. So in public administration vocabulary, the more we'll use state-centered development, right? State controlling the lives of people. We are basically referring to the executive. So in the definition of state, administration to likha hi nahi hai. Then is administration not part of the state? Hai ya nahi hai? Is it there or not? It is, but it's not mentioned. Then what should we do? We imply that under the executive, the administration already exists. For this, we have to understand Article 74, right? Article 52, 53, President. President कैसे काम करेगा? With the help of the officers subordinate to him. 74. Who are the officers subordinate to him? Prime Minister, Council of Ministers, and the Secretariat, जो भी civil services है. ये हो गया इसका practical understanding. But theoretically क्या है? When we say okay state simplified way में हम government की बात कर रहे हैं. Government का मतलब है executive. Executive has two parts, this and this, right? This may be a core focus of the study of political science, but this is a core focus of the study of public administration. But try to understand that this will not have an existence without this. So we'll say that a study of administration means what? Study of the political system as well, where the administration is functioning. So public का sense अब क्या हो गया? See, who exercises power on behalf of the people for the collective interest of the people? State. So public means government, system of power, fine? और administration क्या है? उस power का use, the exercise of that power, the execution of that power, or the functions performed by that system for the welfare of people. So administration को हम literally बोलते हैं administrare, which is not the complete meaning. Latin word administrare means to serve. But technically it's not to serve, it is to govern. Basically इसका meaning क्या है? To implement, to execute, to govern. But yes, we are trying to be good when we are writing the theory, and we said, okay, administrare would mean to serve the people. Ab who are these people? We. So any state, right,
which intends to serve the people through a system of power and any other mechanism that it develops. That is the domain of the study of public administration. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग क्या क्या हो सकती है, बहुत हो सकती है. प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद क्या क्या हो सकता है. सी इट्स नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लेयर. अब उसका लेयर ये समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड. सो यू आर इंटेलिजेंट पीपल, आई नेवर थॉट यू आर सो इंटेलिजेंट. फाइन. सो generally we are defining, or we start our definition from here. But let us now come. So public administration, the moment I look at this term, फाइन, अब मीनिंग में ये भी आता है कि जब मैं पबैट को देखता हूं तो मैं कोई, मुझे क्या याद आता है? यूपीएससी, मेरा चेहरा, फाइन, किसी और का चेहरा नहीं. मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग यूपीएससी फॉर योरसेल्फ और समवन एल्स. अच्छा, नॉट लाइक कटारिया है, द रैंक वन जो था, गर्लफ्रेंड के लिए किया था उसने. फाइन. तो बहुत 100 इयर्स के इतिहास में एक ही को ऐसा इंस्पिरेशन आया, मतलब दैट्स कमेंडेबल, राइट? Why not? What is wrong in that? Your generation Z or Alpha or Z plus? कौन सा generation आप? Z हो है ना? So should I behave differently with you? Okay. Because I am one generation ahead of you, right? Intellectually, right? Not obviously age-wise, तो मैं पीछे हूँ. तो logically, right? Public administration को जब आप पढ़ते हो, आपको क्या आता है दिमाग में? Subject? लॉ, ठीक है. तो इन सिंपल सेंस क्या समझ में आता है? पबैट एक ऑप्शनल है, राइट? इज इट अ सब्जेक्ट? फाइन, करेक्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट मॉरल थिंग्स, बट लेट्स बी वेरी सिंपल हियर. पबैट क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक. कैन आई राइट समथिंग एल्स कि पबैट एक सब्जेक्ट भी है एंड इट इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन? कैन आई से इट इज समथिंग टू बी स्टडीड, it is an area of study, right? That means somebody would have contributed, a lot of people would have contributed in developing the theory of public administration. So it has a theory, right? चलो, ये theory कैसी होगी? Descriptive होगी. It would be telling about things, right? Describing it, analyzing it, providing us with knowledge. ये knowledge क्या concrete होगा या abstract होगा? दोनों हो सकता है. फाइन. सो थियरी होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, राइट? अब ऐसे कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल वी से, ओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? फॉर अदर्स, नॉट फॉर मी. भाई मैं आईएएस ऑनेस्टी के लिए थोड़ा बन रहा हूं, राइट? इतनी मेहनत की है, इतने पैसे खर्च किए, नहीं? पिताजी ने रिक्शा चलाया, किसी रिक्शे वाले का, है कि नहीं? रिक्शा खरीदा हमने जबरदस्ती कि हम चलाएंगे, राइट? इट माइट बी अ गुड ओमेन कि वी कैन बिकम सिविल सर्वेंट. नो नो, आई एम नॉट रिडिकुलिंग समबडी, बट दैट्स अ फैक्ट, राइट? कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट वो शोन इज हाउस, वो बोल रहा है मेरा घर ही नहीं है, ये बताओ. अमिताभ बच्चन ने उसका घर ही चेंज कर दिया कि बेटा बंगले से तुम झोपड़ी में आ गया. राइट? करोड़ रुपए झोपड़ी के पीछे रखे, लेकिन जाना तुम्हें झोपड़ी से पड़ेगा. Fine. So when you say theory, knowledge, there will be description. What is government? What is politics? What is policy? What is public? ये सब description होगा. Fine. Many of this, most of this knowledge would be very clear cut, right? It may be scientific, organized, right? Well researched, predictable knowledge हो सकता है. So a part of this description would be empirical or scientific. तो ये हम बोल सकते हैं कि पबैट एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, पार्टली, लाइक इन द बिगिनिंग वी आर डिस्कसिंग, ठीक है भाई. वन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इवन दो इट वुड बी टॉक्ड अबाउट, इट वुड बी रिटन अबाउट, कैन नॉट बी साइंटिफिक बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी, अनप्रिडिक्टेबल होगा. सो एक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कैन आई यूज अ वर्ड? नॉर्मेटिव. व्हाट इज नॉर्मेटिव? जो थोड़ा सब्जेक्टिव है. फाइन? नहीं भाई, दो सौरा सब्जेक्टिव. घर जैसा खाना, किसके घर जैसा?
यार जो लिख रहा है रेस्टोरेंट में घर जैसा खाना खाओ, अरे तुम्हारे घर जैसा खाना है, ये मेरे घर जैसा खाना। इज इट सब्जेक्टिव और नॉट? Right? The moment you say, oh, we want to develop society, right? We want to promote inclusive development. क्या parameters है भाई? Right? We are welfareistic nation. What are the parameters? क्या parameters है? So welfare in US might have some different notion. Welfare is welfare, right? But see the parameters, scope, right? उसका जो degree होगा वो अलग होगा, यहाँ अलग होगा. But ये fact है कि certain elements will remain normative. Normative means subjective, opinion based, या जिसको हम बोल सकते हैं not factually proven, right? Empirical is more fact based. Facts क्या होते हैं? जो observable हैं, which are quantifiable, which are repetitive, but they are not the facts like sun, moon, and the stars. They are called social facts. Fine? 9 o'clock, the girl comes out of the house every day. Fine? And Mr. X is standing at the corner every day. Fine? Mummy is observing every day from the balcony. अब कैन द मम्मी से कि भाई ये फैक्ट है कि मेरी बेटी निकलेगी, ये बच्चा वहां खड़ा होगा, ये फैक्ट है भाई, है। बट क्या ये फैक्ट वैसा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट फैक्ट। बट यस, इट इज समथिंग रेपिटेटिव, रेकरेंट। फाइन, ये है या होगा, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, फाइन। सो नॉर्मेटिव जो है वो सब्जेक्टिव है, या हम इसको बोल सकते हैं वैल्यू बेस्ड। As per the opinion, as per the judgment of the others, the interpretation will change. So it's not as simple as कि this is a watch or this is a bottle of water, which everybody would say bottle of water. See? नहीं तो इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, राइट? किसी ने बोला बेटा मैं तुम्हें दुनिया की सबसे पावरफुल चीज दे रहा हूं, पेन। फाइन, पेन जो अब पीएमओ के डस्टबिन में पड़ी रहती है। भाई मीडिया वालों का पेन पड़ा रहता है ना कहीं तो। अर्नब गोस्वामी जो है, भाई इतने महान मीडिया, हाउ दिस इज द एरा ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया, द बिगेस्ट पॉसिबल फ्रीडम। एंड नथिंग, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल, आई एम सिंपली सेइंग यस, फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मीडिया रेगुलर, बट वी ऑल आर टेक्निकली फ्री, वी कैन स्पीक व्हाटएवर वी वांट, फाइन, अनलेस वी स्पीक व्हाटएवर दे वांट, है ना? बट चलो भाई छोड़ो, फाइन। तो ये लॉजिकल है कि जब आप अपने इंटरप्रिटेशन, व्हेन यू ब्रिंग योर इंटरप्रिटेशन, राइट, योर जजमेंट्स इनटू दिस, तो हम बोलते हैं कि वो वैल्यू बेस्ड है, योर प्रेफरेंस, इट्स नॉट समथिंग एब्सोल्यूट, राइट? सो पबेट सब्जेक्ट है, अब उसके ये एस्पेक्ट्स हैं, ये पढ़ना है हमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम है, राइट? कैन वी से कि भाई इट इज अ सिस्टम, इट इज विजिबल ऑल्सो लाइक समथिंग, राइट? ये एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जो दिखता भी है, राइट? सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं दिखता भी है, वेयर इट इज विजिबल। करेक्ट, वेयर, लाइक वेयर, कैन यू गिव एन एग्जांपल? करेक्ट, इज देयर अ प्लेस, फिजिकल प्लेस? यू राइट। सो इट इज अ सिस्टम, फाइन, which is visible as something। तो क्या हम इसको बोलते हैं कि एक फिजिकल सिस्टम भी है भाई, राइट? इट इज डिजाइन्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे एंड इट लुक्स लाइक समथिंग, ठीक है? इट मे नॉट बी जस्ट द बिल्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, ठीक है? अब ये फिजिकल भी है और एनालिटिकल भी है। आई विल टेल यू द मीनिंग नाउ, यू विल अंडरस्टैंड। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नया वाला, right? Is it a physical system? Have you seen that? Have you seen on photos, images, or you actually seen it? Fine. बारिश में मत जाना है ना, the ceiling leaks, हाँ ठीक है, तो तुमने देखा है भाई, देखा है ना, ठीक है, करेक्ट। If I say that the Indian Constitution visualizes Parliament, right,
to be the voice of the sovereign. Right? What does this mean now? अब पार्लियामेंट वहां भी वर्ड यूज हुआ है, राइट? पार्लियामेंट यहां भी वर्ड यूज हो रहा है. सो यहां पे हम वन, यू आर विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर, द डिजाइन ऑफ द सिस्टम. इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर. What is visible, right? What is arranged, how it is or how it looks like, how it functions. Fine? एक क्या है? Mental. Constitution क्या है? किताब है. और Constitution सोच भी है कोई? Is it a way of life? Is it something which is beyond just the book? Fine? Letter भी है, spirit भी है कि नहीं है? वैसे ही Parliament भी है. Is it legislature just the body, the system, the building, or it is something beyond that? It is beyond that. It is a reflection of the democracy of this country. It is the symbol of representation of people. Sovereign power का जो representation है वो कहाँ पे है? Parliament में है. Right? So see, it has something meaning which cannot be physically defined. Right? इसको बोलते हैं analytical system या analytical aspect of the system. So one is physical structure, one is analytical structure. Simplify करो. Marriage as a system. Physical structure भी है उसका, ठीक है? दो लोगों की शादी होगी, procedures, rituals, patterns develop होंगे, right? Marriage क्या है? एक sacrosanct system भी है. Fine? Same. Every social system that you see, it has two parts. One concrete, which is visible. Other is analytical, which is not visible, but which is philosophical, ideological. वैसे ही पबैट भी है. एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक आइडिया भी है जो एग्जिस्ट करता है. द मोमेंट यू से आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री एंड फेयर, आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रो सिटीजन, आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट, what does it indicate? Right? It's not dependent on people. The system is like that. People can come and go, it doesn't matter. See? So, system. हम इस system को normally we use a term for it. क्या term use करते हैं? Bureaucracy. So what is PubAd? A system, right? Which is referred to as bureaucracy. Upper में correct, ethos of a nation, right? You're right. So when you say Gandhi, Gandhi. When I say Gandhian or Gandhism, philosophy, that's the idea. Constitution, constitution, constitutionalism, philosophy. Fine, right? So अगर मैं बोलता हूँ कि भाई system है, bureaucracy है, तो the moment you say कि public administration के अब दो meanings हो गए, एक subject, एक system. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या फंक्शंस भी हैं? Does it also indicate a set of functions? Right? The functions which are distinct from something which is performed in private administration. इसलिए हम उसको पब्लिक कह रहे हैं. Collective interest. Right? So we can use a word कि भाई इसके कुछ functions हैं. कौन से functions? जो internally भी perform होते हैं, internally in the system. फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बजटिंग, प्रोसीजर, जो भी इंटरनल भी है, और एक्सटर्नल जो उसके गोल्स हैं. व्हाट आर द गोल्स? क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भाई? पब्लिक पॉलिसी. और क्या? कलेक्टिवली वी कैन से कि द फंक्शन इट परफॉर्म्स इज पब्लिक पॉलिसी. लॉज, वेलफेयर स्कीम्स, डेवलप, जो भी करे पब्लिक पॉलिसी, राइट? और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द गोल? What is the goal? It performs public policy functions, right? But what is the objective? भाई अलग अलग goals हो सकते हैं, but what is the general goal? भाई when you are preparing for civil services, if I ask you what are you preparing for, you will tell me sir civil services, right? ये तो नहीं बोलोगे सर मेरे को IAS में चाहिए, but लेकिन रैंक मुझे 12 चाहिए, 2+1 3 मेरा सर फेवरेट नंबर है. ऐसे क्लासिफाई करते हो या बोलते नहीं आई जस्ट वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विस? ये भी है. वेदर यू डू इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर यू टॉक अबाउट हाउसिंग,
You talk about public distribution system, you talk about inclusion, women development, tribal development, it doesn't matter, right? What is the collective idea? Public interest. The ultimate purpose, the ethos, right? The underlying philosophy, the spirit of public administration, right? Its inner conscience is working for what? Or it should at least work for what? Public interest. अब ये बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, यहां से हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं हमेशा. एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं. सी सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा है. लिखा है सिलेबस में कि मीनिंग का मतलब बेटा कैसे पढ़ोगे, राइट? ये तो टीचर के ऊपर है. सी दैट्स द डिफरेंस ऑफ पेडागॉगी. फाइन. द वर्ड पेडागॉगी इसलिए बनाया गया कि उसकी एपिस्टेमोलॉजी भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. फाइन. सिंप्लीफिकेशन is good. We'll simplify, we'll understand it at the very basic level, household level पे समझेंगे उसको, right? But you cannot be mediocre. Simplification is not equal to mediocrity. कि बेटा ये पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो, है ना? क्योंकि बच्चे को थोड़ा टफ लगेगा तो इसलिए मैं टफ क्यों पढ़ाऊं? That means I'm playing with his career. बिकॉज द सेम बच्चा हो, जो बच्चा 21 साल का, वो 2 साल के बाद एक मैच्योर्ड एस्पिरेंट होगा, फिर वो कहीं बैठ के फिर से मुझे गाली दे रहा होगा कि इसने मेरे पैसे बर्बाद किए, टाइम बर्बाद किया. लेकिन मुझे आज पता चल रहा है, नहीं, जब मेरा बच्चा मेरे साथ एग्जाम देने जा रहा है, what to, this is the reality, what to do. Fine. Because that is what the Indian जनता is. They will not listen to logical thing in the beginning, बट बाद में उनको समझ में आता है, बहुत देर हो जाती है तब तक. फाइन. तब तक जो है 14-15 साल बीत जाते हैं. फाइन. भाई, where is the leadership in this country? Fine. Everybody is self leadership. Everybody is leader. मुझे सब आता है. सी everybody knows everything. You go to YouTube, you'll find 1000 strategy videos. उसको पढ़ने में मेरा 1.5-2 साल निकल जाएगा. फिर 2 साल बाद जब तक मैं वो स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा तब तक 1000 और वीडियोस आ गए. सो 4-5 साल के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई अच्छा ये सिलेबस को ऐसे पढ़ना था. फाइन. जैसे ही मैंने समझा सिलेबस को ऐसे पढ़ना था, यूपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया. राइट. अब 5 साल और क्या करें? फाइन. आफ्टर दैट सिर्फ पीसीएस रह जाएगा, क्या करें? फाइन. दैट टू जैसे योगी बाबा ने बोला, नहीं भाई एज कम करो, खत्म करो, एज कम करो भाई बच्चों की, करो. फाइन. इट्स नॉट गुड कि बाप बेटे एक साथ लिख रहे हैं. अच्छा लगता है, राइट? 42-year-old father and 21-year-old son, both are writing pieces at the same time. Doesn't look good यार, ये कोई बात है? तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं. It is destructive for the society. See, the father has not settled till now. What is this? जो भी यूपीएससी देता है उसके साथ ये प्रॉब्लम है. फाइन. 32-35 के बाद वो ढूंढने लगता, अब क्या करूं? फाइन. मीनवाइल उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, अब क्या करूं? पकोड़े बनाओ. फाइन. या मोमोज ज्यादा चलते हैं, मोमोज बना लो, क्या हो गया? Right? They are earning more than 1 lakh per day, per month. You know, maybe more than that. I don't know. Fine. So logically, system है, right? System जो है, it is or it looks like something, it performs something, right? And collectively, that idea is called public interest. See, UPSC has asked this question. Now, I won't say कि भाई ये कहीं है नहीं है. Nicholas Henry's book, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, उसमें ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है, सब चैप्टर डेडिकेटेड है फिलॉसफीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एक स्टूडेंट जो मोहित भट्टाचार्य नहीं पढ़ पा रहा है अभी, वो निकोलस हेनरी क्यों पढ़ेगा? राइट. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है दैट इन पबएड वी हैव टू रिलाई, राइट, ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है. Right? वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, नॉट जस्ट पबएड. Those subjects which have dominance of foreign authors, mostly humanities, right? That is a problem.
Fine. But see, it doesn't matter. If we start interpreting slowly, PYQs को अगर हम अच्छे से देखेंगे, we'll understand. क्योंकि this is what the UPSC's idea is about this particular topic. Right? Now let us start small things. Don't write anything. You understand first. सब लिखेंगे. Whatever we'll write will be in the exam, or you can say vice versa. But we'll write everything. Fine. So you don't have to worry. जो भी होगा सब आपके नोट्स में होगा. आपको ले जाना है, चबाना है, डाइजेस्ट करना और वहां जाके, लेकिन दिमाग के साथ. Fine, you don't have to just memorize. You cannot do that just by memorizing. Fine, let us say. So our first lecture always begins. Fine, we'll do syllabus analysis, don't worry. But पहले मैं चाहता हूं ये बेसिक आपको पता हो, तब तो मैं syllabus को समझाऊंगा. We start with the basic analysis. What is public interest? अब this is not mentioned in the syllabus, right? This we have to interpret. We have to bring this idea ourselves. This question has been asked in the exam. Now, if a student says कि अब मैं कहां से सोचूं, fine, तुम मत सोचो, इसीलिए तुम पैसा दे रहे हो मुझे, right? अगर मैं भी ना सोचूं फायदा क्या है फिर? तो आप नहीं सोच सकते, फैक्ट है. या आप बहुत टाइम पढ़ने के बाद शायद सोच सकते हो, right? If your references will be wider, you might think it will take time. Fine, competition का मतलब ही क्या है? Strategy. Finish. Right? Let's say public interest को हम कैसे define करते हैं? Can you tell me? Now there are philosophies of public interest, right? There is analysis of public interest. There are many scholars who have talked about this idea. How do you interpret public interest? पहले ये agree करो that public administration's one of the primary goal is public interest. Public administration may directly have three meanings or three dimensions. One, subject. One, system. One, set of functions. Okay? One of the important function of that is public, or one of the prominent role public administration is public interest. Interest को कैसे define करना? Correct, right? But how? What will you do for betterment of people? लोगों को फ्री OTT, वो नेटफ्लिक्स का वो चाहिए सब्सक्रिप्शन. फाइन. नेक्स्ट जियो माइट डू दैट कि भाई अभी मैं तुम्हें 5G दे दिया, राइट? अब फोन, अब तुम्हें नेटफ्लिक्स दे रहा हूं मैं. करेक्ट, राइट? ओके, यू माइट बी प्रो पुअर, राइट? आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, अंत्योदया. गांधीयन फिलॉसफी, like 2 October, Gandhi's view on governance. You are a POBAT student, you should interpret that. Gandhi's philosophical view भी है, political philosophy भी है, right? But उसका governance पे भी view है कि अंत्योदया. What is Gandhian philosophy of अंत्योदया? Through education in village and tribal areas. Correct, Mahi, right? Fulfillment of basic needs, that is also correct. तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं. How do we understand कि what is the underlying criteria, right? जैसे तुमने बोला, अगर मैं बोलूं अंत्योदया एक criteria है, poorest of the poor, बिल्कुल. That can be considered one ethical moral criteria. If we are doing something for the society, first let's find out those who are the most underprivileged. ये ढूंढते हैं पहले, ठीक है? कहाँ मिलेंगे? हम लोग हैं सबसे, हम नहीं है. अरे यूपीएससी जितने दिए हुए बेचारे हैं, दिल जले जितने भी हैं सब, है कि नहीं? 3 इंटरव्यू देके बताओ क्या कर रहे हैं, राइट? उस समय ये भी नहीं था तुम्हारा वो सेतु क्या बनाया उसने अभी जो भी. भाई यूपीएससी हैज मेड दैट पोर्टल, प्रतिभा सेतु. फाइन, उस समय प्रतिभा पाटिल थी, सेतु तो था नहीं. तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए. आई वॉज इन द वेटिंग लिस्ट, फाइन. वेटिंग लिस्ट कुड नॉट क्लियर. नेक्स्ट ईयर क्लियर हुआ, उस साल क्लियर ही नहीं हुआ 2009 में. व्हाट टू डू? फाइन, जिसका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ उसमें से कुछ लोग को कस्टम्स मिल गया, सम गॉट डैनिक्स पॉन्डिक्स जॉब है, राइट? तो ऐसा नहीं, दे गॉट गुड सर्विसेज, मेनी ऑफ देम. I think Chandan Jain is one of them. He's in Delhi. He gave interview with me only. So वो शायद नहीं, he gave one more attempt after me. Yes, it was his third attempt with me. Fourth he gave. When my fourth was over, his third was over, right? So वो I think 14th या 15th rank थी उसकी. He qualified. Next year they cleared. 2 महीने बाद clear कर देते हैं वो waiting list. So वो भी destiny ऐसी, right? My last attempt there were 700 seats. Fine, that's technically makes 350 for the general category, 350 for वो. So ये fact है कि भाई वो भी destiny है. Fine.
तो चलो हमने बोला हम ढूंढते हैं भाई कौन है सबसे बैकवर्ड, कैसे ढूंढेंगे? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पबैट। प्रॉब्लम क्या है, हम उसको याद करते हैं, ठीक, याद करते हैं ना। रिमेंबर अंडर प्रिविलेज लिखना है बेटा, है ना बेटा, बैकवर्ड लिखो, हर जगह बैकवर्ड लिख दो, राइट? सर फॉरवर्ड के आगे बैकवर्ड लिख दूं? हाँ सर बेटा लिख दो। You're not enjoying the process. What are you doing then? Right? तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा है करने में जो तुम करना चाहते हो, राइट? हाउ विल यू डू इट फॉर 1 ईयर? हाउ विल यू फाइंड आउट कौन है बैकवर्ड? डेटा, स्टैटिस्टिक्स, आधार, एविडेंस है ना तुम्हारे पास? दैट्स सी, पबमेड इज नॉट बेस्ड ऑन परसेप्शन कि सर मैं गरीब हूं, अरे मैं कैसे मान लूं? नहीं हो सकता ना। तो पबमेड कैसा सब्जेक्ट है? सी अभी हमने बोला साइंटिफिक एम्पेरिकल है, फैक्ट बेस्ड है। सो इफ यू से पब्लिक इंटरेस्ट हैज टू बी सर्व्ड, लेट अस यूज वन आइडिया कि देयर इज अंत्योदया, गांधीयन फिलॉसफी ऑन गवर्नेंस। चलो अंत्योदया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मोस्ट वल्नरेबल, सी लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, जो आखिरी आदमी पहले उस तक जाओ, ठीक है, करेक्ट है। तो हम कैसे पता करेंगे? फैक्ट से, डेटा से, राइट? डेटा गलत भी हो सकता है, नो डाउट। द पीपल हु आर कलेक्टिंग द डेटा मेकिंग, गलत हो सकता है। फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग? डिजिटाइजेशन, राइट? इज इट नॉट इजी टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट when we can digitize the service? कर सकते हैं, अच्छा बहुत इजी है, फाइन। देन हमने बोला ठीक है भाई वल्नरेबल्स, राइट? अब वल्नरेबल में भी और वल्नरेबल है, women, children, tribal, see, particularly vulnerable tribal groups, PVTB सुना है भाई? सो women हो सकती हैं, see, fine, see they are already uplifted, but who did it? We did it, fine, so they don't accept it, they have to be self empowered, है कि नहीं? अब आप बोलो मैंने तुम्हें एम्पावर किया तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना भाई, इट्स इलॉजिकल, फाइन। माइनॉरिटी है, ट्राइबल्स है, लेट्स से वी आर गेटिंग इनटू दिस, चिल्ड्रन, वुमेन। अब हमने बोला कि ठीक है भाई सबका होना चाहिए, ये सारे बैकवर्ड्स हैं, सारे वल्नरेबल है, इसमें और भी वल्नरेबल है। नाउ इमेजिन वुमेन आर वल्नरेबल बट बैकवर्ड वुमेन, ट्राइबल वुमेन, तो क्या करना है? इसमें सब क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, दे आर नॉट ऑल इक्वल, ठीक है, किया। फिर आपने बोला ठीक है भाई सबसे जो बैकवर्ड है, वल्नरेबल है, वी आर लुकिंग वर्किंग फॉर देम, बट इट डज नॉट मीन कि जो बाकी है उनका हम काम उनके लिए काम नहीं करेंगे, करेंगे उनके लिए भी कि नहीं? ये रोड सिर्फ ठेले वालों के लिए है, हमारे लिए भी है, फाइन। इकोनॉमिक्स तो बोलती है कि भाई रोड उसकी होनी चाहिए जो टैक्स देता है, नहीं, फाइन, बट केजरीवाल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने नहीं पढ़ा, नहीं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, रिग्रेसिव टैक्सेशन भैया, राइट? तुम फ्रांस हैड रिग्रेसिव टैक्सेशन, यू नो, one point of time, and it became very useful. Those who were earning less were paying more, you know. So France had this model, regressive taxation, and because of that people had to earn more so that they have to pay less taxes. Now that is also a model of empowerment, right? India also has a model of empowerment, right? Don't earn, don't pay, plus misuse the public resource. तुम्हारा जीवन खत्म बेटा, अब जाओ। So we need to empower all, no doubt. We need to empower them, work more for them, divert the resource for them, but we also need to follow सर्वोदया। ये भी गांधीयन फिलॉसफी है भाई, अंत्योदया, सर्वोदया, the rise of all, right? Everybody should rise, सर्वोदया, not just the backward or the most vulnerable, ठीक है, ये भी अच्छा। तो यहां पे क्या है? इक्विटी, राइट? यहां पे क्या है? इक्वालिटी, करेक्ट, फाइन। You order a pizza, right? Already your 3 friends have sensed you have ordered the pizza. The moment pizza is delivered, they come to your room कि क्या कर रहा है? And you are still in shock कि क्या बोलूं, क्या कर रहा हूं, है ना? Waiting to eat the pizza.
Fine. So you obviously you have the etiquette, you offer them ki bhai you can have it. Fine. All of you divide one pizza into 4 pieces. There are 4 friends. You divide it. हो गया भाई equality 1/4. But इस equality से पेट किसी का नहीं भरा. Nobody could feel, or feed their hunger, right? And obviously there were some who had already eaten, right? Still they were eating the same, right, as you. But imagine another scenario in which you have friends who are little educated, right? उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, चलो ठीक है, तो उसको लगता है कि यार ये अच्छी बात नहीं है. See, we have already eaten, right? This guy has ordered, paid his money, chalo, he's a friend, but still, right? We can allow him to eat more because we don't want to eat that much. So equity is when one of them says, no, I just had lunch, I will not eat. The other said, I just ate something, so I'll not eat that much, right? So two of them, अब आपने क्या किया, एक जो है 2 में डिवाइड हो गया. एक ही फ्रेंड है जो थोड़ा बदतमीज है, वो नहीं मान रहा है, राइट? और फिर आपने हाफ ऑफ डिवाइड किया. Now at least you both could, right? So equity is when you need more, you get more. When you need less, you get less. It's not exploitative. Equality can be exploitative, right? In that sense, because everybody is anticipating and expecting the same thing, similar thing, right? अंबानी को भी डर है कि कल भगवान मैं गरीब ना हो जाऊं. नहीं, वो कितना भी गरीब होगा, राइट? तो हमारे 8-10 जनरेशन को मिला के उससे तो अमीर ही होगा. फाइन. हमें भी डर है अपनी लाइफ का. नहीं, हमें भी डर है हम गरीब ना हो जाए, कल डिजास्टर में ना मर जाए, कुछ ना हो जाए. वी आर, राइट, कॉमन मैन, मिडिल क्लास, इज स्केयर्ड और नॉट. फाइन. सो अब ये बोले, कोई ये बोले कि भाई हु हैज ऑल द रिसोर्सेज and he feels the same vulnerability as us is impossible. It's not possible. So equity is more justified than equality. You can say positive discrimination है. Fine, वो भी equity तो है, right? बिल्कुल equity, yes. So if we, let's say, use these two ideas, तो then we say कि अच्छा ठीक है भाई, public interest ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, right? If we do this, then also public interest. If we do this, then also public interest, right? Degrees अलग अलग है. गांधीयन एक और कॉन्सेप्ट है, सी, स्वराज, पॉलिटिकल फिलॉसफी. फाइन. स्वराज, स्वराज एंड स्वराज, right? Swaraj is self-governing, right? Self-rule, yes. Swaraj is good governance. Right? Suraj, good governance. Fine. Self-governance. See? Now that is also an aspect of public interest. If people govern themselves, they might be more happy, more satisfied, right? Able to serve their needs in a better manner. तो हमने बोला ग्राम पंचायत बनाओ. Article 40 of the Constitution, Gandhi says, or Gandhian philosophy says, organization of village panchayats. Even though it is in DPSP, not justiciable, but still, भाई है तो एक विजन कि पंचायत बनने चाहिए, बने भी, they are now there. Fine. So you can have Swaraj, devolution of power, self-rule by decentralization of power. ये भी एक public interest philosophy है. Suraj, obviously this decentralization of power should lead to the betterment, right? And not the worst of the society. Is it possible कि ये जो power decentralized किया, right? We have given it to the lower levels. Will these people be utilizing that power properly? Recently, right, a class 12th girl committed suicide because her parents had put CCTV in her room. In Delhi, right? This was news of Delhi. Do you read newspapers? तो तुम्हारे घर पे कोई और तो नहीं आता ऐसा, कोई और वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर जो, फाइन, तो मुझे इन्फॉर्मेशन अलग मिले, तुम्हें अलग मिले, ऐसा तो नहीं होता. फाइन. सो रीड इट. आई विल टेल यू व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, एटलीस्ट फॉर योर ऑप्शनल, इन जनरल फॉर पेपर 2, wherever this optional is useful, right? न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है.
right? But not like a textbook. Otherwise, it will take a lot of time. So wastage. So that girl committed suicide. She was under pressure because the parents had put CCTV, right? Parents wanted to monitor the girl's timetable. She was preparing for IIT or some NEET exam. Is it justified? But now parents will say that we did it because हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे थ्रू अपना भला चाहते हैं, ये नहीं कह सकते है ना, बट तुम्हारा भला चाहते हैं भाई इवेंचुअली मेरा बेटा कलेक्टर बने, राइट? तो इंपॉर्टेंट ये कि मैं कलेक्टर का फादर बनूं, ये इंपॉर्टेंट है उसको, वो तो कलेक्टर बन ही जाए बेचारा, कोई बात नहीं, राइट? कोई ये नहीं बोलता मेरा भतीजा कलेक्टर बने, right? If your padoti is your good friend last 60 70 years, generation to generation you are friends, he will never say कि मेरे पड़ोसी का बेटा कलेक्टर बने, right? वो खुद ही को बोलता मेरा बेटा कलेक्टर बने, right? That's called ethical egoism. Charity begins at home, right? भगवान सबका भला करो, शुरुआत मुझसे करो, that's correct. भाई अगर शुरुआत नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, right? ज्ञान से तो घर नहीं चलेगा, वो तो पता ही है कि ज्ञान से देश भी नहीं चलता है, right? तो what is the use of this ज्ञान? Fine. So let us say if we decentralize power, then also it is possible, right, that people may not be able to benefit from it. So decentralization या स्वराज self governing system एक मॉडल है but may not always be successful. It comes with certain conditions. Good governance is an aspect of that if we are decentralizing power, तो ये power कैसे decentralize हो, अच्छे तरीके से. People should participate, people should get opportunity to participate in that. India में caste system है, you know, obviously you must be knowing. So India has caste system. Because of the caste system, what happens? The power is concentrated at the top. Even if nobody will agree to that, but that is the truth. Even in the caste system, after reservations, positive discrimination, power फिर से concentrated at the top. That is why Supreme Court has accepted sub-classification of SCs and STs. वो debatable है, but still, right? So it is obvious that जो caste system है उसकी वजह से even if you decentralize power, it may not be actually correct. Now, so this idea, public interest, is understood from varied perspectives. हम इसको पढ़ते हैं, लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, लेकिन पढ़ते क्यों कि क्वेश्चन आता है. So we study, ethics में भी आता है, see, public interest philosophy. So when you study, we try to understand कि भाई how public interest as an idea is understood and how it can be applied. So when an administrator is implementing the policy, obviously he's not making the policy, but he is contributing to public policy, right? Will he not be able to give better advice to the politician or minister if he understands, right, the impact of this, whatever decision they are going to take? इसलिए administrators को ये पढ़ना है, right? Welfare भी एक basis है. What is welfare? Same what we have studied is welfare. Empowerment is also a basis. What is empowerment? So to understand public philosophy, हम क्या करते हैं? We studied, or public interest as an idea, we study various philosophies of public interest. What are these? These are the basis on which we can understand it. In ethics, have you studied certain principles? Utilitarianism, teleology, deontology, सब पढ़ा हुआ है. Justice, fine. बहुत सारी philosophies है public interest की, ठीक है. जैसे अभी हमने बोला गांधीयन फिलॉसफी, ये एक थियरी हो गया, नॉलेज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन मेक डिसीजंस, मेक पॉलिसीज. लेट अस से गवर्नमेंट इज यूजिंग इट टुडे. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स हैव यूज्ड इट, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे हाउ गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस गांधीयन फिलॉसफी. Which of the programs they are using? Many programs they are using. Can you give me one example? योजना, ठीक है भाई, हाँ. अंत्योदय योजना, right? Any other?
स्वच्छ भारत भी ठीक है, हाँ. गांधी said cleanliness is next to godliness, right? और कोई ऐसा जहां डायरेक्ट दिख रहा हो कुछ ऐसा? आत्मनिर्भर, ठीक है. स्वराज, that means you are saying most of the policies influenced by Gandhian philosophy, right? गांधी का कोर फिलोसफी क्या था? मैं आई एम कमिंग टू द लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, ठीक है. फर्स्ट क्लास के लिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? ओवरहेड ट्रांसमिशन ना हो, फाइन. फ्यूज हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो है कम से कम. तो गांधीयन है, उनका जो कोर फिलोसफी है वो सोशलिज्म है, जिसको हम बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म. Even though we are using all these terms, but socialism is socialism. We are trying to create a category by using the word Gandhian socialism. अब एक नेहरूवियन सोशलिज्म भी है. नेहरू तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है आजकल तो. सो भाई नेहरू इज मोर पॉपुलर देन टुडेज पॉलिटिशियंस. फाइन, एवरीथिंग वाज डन बाय हिम. तो क्या कर सकते हो, तो खैर प्रॉब्लम. फाइन, लॉजिकली, राइट? सो सोशलिज्म was an idea promoted by Nehru also, Gandhi also, and Bhagat Singh also. Yes, Bhagat Singh, revolutionary socialism. Why not? Sardar Patel was more in favor of market mechanism, market economy, Sardar Patel. But yes, he could not become the PM, right? Otherwise, probably his ideology would have been more influential. And he died also after just 2 years of independence. तो उतना इन्फ्लुएंस नहीं आ पाया, लेकिन you'll see most of the constitutional philosophy in India, उसमें जो public interest का concept है, right? वो justice के around है. Preamble when you read, right? Social, economic, political justice. And rest of the जो public interest है, that is more centered in DPSP, and that is somewhere influenced by Nehruvian and Gandhian socialism, right? So Gandhian socialism क्या है? Control on resources by the state, नहीं, by the people. तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, राइट? दोनों डिग्री है, वेरिएशंस है, राइट? सोशलिज्म, भाई कम्युनिज्म ज्यादा रेडिकल एस्पेक्ट है उसी का, सोशलिज्म उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. सो व्हेन यू से दैट resources of the society should be controlled by people themselves, right? That's one of the aspect of अभी आपने बोला, right? स्वराज है ना भाई, कम्युनिटी कंट्रोल्ड एसेट्स. तो अभी आपने बोला करेक्ट, लेकिन तुमने ये समझा नहीं कि क्यों तुमने बोला. ये आंसर है ना, स्वच्छ भारत अभियान किस पे फोकस करता है? कम्युनिटी टॉयलेट्स, कम्युनिटी सैनिटेशन प्रोग्राम. फाइन, द मोमेंट ऐसे कम्युनिटी फार्मिंग करो भाई, गांधीयन सोशलिज्म, राइट? तो ये लॉजिकल है कि ये एक फिलॉसफी है विच इज द बेसिस ऑफ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स विच वी सी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पब्लिक इंटरेस्ट. यहां से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इजीली. फाइन, नाउ कुछ मॉडर्न लाइक नेहरूवियन, आई सेड विल टॉक अबाउट इट लेटर. अब नेहरूवियन मॉडल थोड़ा अलग है. गांधी बोलते डिसेंट्रलाइज द पावर, गिव इट टू द पीपल. People will control the resources, they will do planning, they will make decisions. Gandhi was never in favor of industrialization. He wanted deindustrialized development. Fine, इसलिए लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप मॉडल्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं टेक्निकली, राइट? कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात, दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स. बट विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता. तो नेहरू आते हुए, Nehru gets inspired by Fabian socialism. अब ये ideal socialism नहीं है, right? It's a version more created by Europeans. And in Europe, like there were two prominent people who were associated with India. One of them was associated with India, Annie Besant. Annie Besant was associated with which movement in India? Home rule movement क्या था भाई? अरे मैं बहुत साल पहले फिल्म्स निकाला भाई, कम से कम मुझसे ज्यादा तुम्हें आना चाहिए. लेकिन वो सिखा नहीं पाई ना, सिखाया नहीं सिखाया.
right? She was quite a big contributor, right? Home Rule League movement, Annie Besant. So Annie Besant, right? एशियाटिक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे और चीजें डेवलप हुई. कॉन्स्पिरेसी थियरी भी है कि वो क्यों आए, ठीक है. आयरलैंड से, शी वाज फ्रॉम आयरलैंड, राइट. सो एनी बेसेंट एंड जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, they popularized it. In fact, they became quite influenced by it. Nehru became influenced by them. ये जो फेबियन सोशलिज्म है, it says the people will control the resources, right? But through a government, right? ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी? Through democracy. See, indirectly the resources will be controlled by people. ये समझना फंडामेंटल है, तब आप समझोगे कि क्यों हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं. Why we talk about monopoly of the government? Why India had behaved this way? Why India has not allowed, still now it has not allowed the dominance of the market mechanism? Why government bureaucracy is still dominant over policies and programs? Wintrack एक कंपनी है, अभी recently उसके CEO का, अभी just 2 days back, is the CEO of that company wrote on Twitter कि भाई customs department Chennai has been consistently asking bribes from us, and because of that we are taking the business from here to somewhere else. It has become a big issue. It's an important example you can cite because it is on record. तो CEO है उस कंपनी का, बोल रहे कि भाई मुझसे रेगुलर पैसे मांगते हैं और मैं रेगुलर आई एम गिविंग देम ब्राइब द चेन्नई कस्टम्स डिपार्टमेंट, and I've given a written complaint and still nothing has happened to them. So I'm withdrawing my business from this country. Imagine. Fine? Make in India. तो ये बहुत बड़ा इशू है, right? World Bank, second ARC, when you read the report, World Bank की उसने एक रिपोर्ट साइट की है 2006 की. It's long back, not today. Fine, but even today also I'll give you the data. 2006-7 report on the World Bank says कि जो बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स है, अब तो दे हैव चेंज द इंडिसेस, लॉट ऑफ इंडिसेस, राइट. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, अंकटाड, राइट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. भाई पढ़ा तो हो गए, सब नहीं पढ़ा है. अच्छा, जीएस अलग सिलेबस है तुम्हारा? अच्छा, अलग से. अच्छा, 2 साल का, अगले साल आएगा. चलो बढ़िया, ठीक है. सो लॉजिकली द रिपोर्ट, भाई उसमें एक रिपोर्ट है कि भाई विच साइड्स की व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ पीपल, राइट, टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे हमारे पास एक ग्लोबल रिपोर्ट आती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. यू हैव हर्ड ऑफ दिस रिपोर्ट? अच्छा, चलो तुम्हारा जीएस अगले साल होगा, राइट. इस साल क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन टू जीएस. नहीं, अच्छी बात है. क्या प्रॉब्लम क्या है? फाइन. इंट्रोडक्शन टू जीएस नहीं है, वो भी एक कोर्स है यहाँ पे. फाइन, हियर वी कैन हैव वैरायटी ऑफ कोर्सेज यार. दे आर टारगेटिंग नाउ 11th क्लास स्टूडेंट्स. सो वो क्या पढ़ेगा? इंट्रोडक्शन टू द जीएस. फाइन. न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्या पढ़ना शुरू करें? फाइन है ना. न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर से पहले क्या पढ़े? फाइन. आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल हैव टू लर्न, राइट, कि पढ़ना कैसे है. बोल के, बिना बोले, राइट, लिख के, बिना लिखे, कैसे पढ़ना है. हाउ टू रीड अल्फाबेट्स, ये भी आएगा. फाइन. सम पीपल आर टारगेटिंग 7th 8th क्लास स्टूडेंट, 5th क्लास स्टूडेंट. फाइन. That student doesn't know by the time maybe he prepares for 10 years now. By the time they give the exam, right? Bureaucracy in India में. Fine. What kind of logic is that, right? Exam is part of your life. It's not life. You develop yourself to the fullest potential. जो करना चाहो वो कर सकते हो. आपका पोटेंशियल सिर्फ हिस्ट्री रटने से थोड़ा आएगा. फाइन. सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक रिपोर्ट है ग्लोबल. फाइन. आई विल गिव यू द एग्जांपल क्यों यहां पे यूज कर रहे हैं. इफ यू लुक एट दिस रिपोर्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इट इज ब्रॉट आउट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज अ सिविल सोसाइटी, एनजीओ है एक तरह से. फाइन.
Where it is located? Berlin. So Corruption Perception Index is the report taken out by Transparency International, which is located in Berlin, right? And it brings out, or it accumulates the report of more than 100 NGOs together, right? And then on the basis of that, it develops an index. Ki what is the perception of people regarding their politics and administration? How corrupt people perceive their administrative and political organizations. ये रियल नहीं है, परसेप्शन है. और परसेप्शन किस पे बेस्ड है? फैक्ट्स और डेटा पे. That how bad people look at their political and administrative organizations, right? How do they view? Now look at police. Public administration रटना थोड़ा है, समझना चाहिए. If you understand the words, go and write. You will score marks. Who will stop the marks? The day you realize कि नहीं मुझे ये याद करके यही पेज लिखना है, उस दिन तुम्हारे नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे. Now apply this idea to police. पुलिस के लिए क्या परसेप्शन है आपका? करेक्ट. द मोमेंट गवर्नमेंट सेज कि वी आर ओपनिंग अ न्यू पुलिस स्टेशन, लोग वैसे ही डर जाते हैं. द मोर नंबर ऑफ पुलिसमैन, राइट, द लेस परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी. इनसिक्योरिटी का परसेप्शन बढ़ जाता है जैसे ही पुलिसमैन ज्यादा होते हैं. नहीं भाई, आपको अच्छा लगता है अगर आप बहुत सारे पुलिस वाले एक जगह देखो, राइट? You develop a sense of insecurity. Why? That is your perception. They are corrupt. They will misuse authority. They are not accountable. इनका कुछ नहीं हो पाएगा. तो एक कॉमन मैन, एजुकेटेड पर्सन या जो भी है, नॉर्मल आदमी भी जो अनएजुकेटेड भी है, वो भी डरता है इसी से कि उसको पता है इनका कुछ हो नहीं पाएगा. They will do the investigation. They will submit the report. Right? इन्हीं के बेसिस पे जो भी पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो काम करेगा. राइट? ये क्यों लिखेंगे अपने खिलाफ? Is it not conflict of interest? It is so illogical that police is investigating the excess of power or misuse of power done by the police. Are you understanding? तो ये जो परसेप्शन रिपोर्ट है ये क्या करती है? बताती है कि भाई ये करप्ट है. तो इंडिया जो कंट्री है, ये आप समझेंगे तब जब आप इसको समझेंगे. Now Nehru had a vision that we should have control, or government should have control over resources so that it can serve the welfare of the society. तो नेहरू का विजन जो पब्लिक इंटरेस्ट का था वो ये था कि सोशलिज्म होना चाहिए. Why? Because we cannot rely on market or private sector for the welfare of people. हम उस पर रिलाई ना करें. For that Nehru, right, somewhere initiated the public sector enterprises, PSUs जो बनाए. He called them temples of modern India. वो वही PSUs रीजन बने हमारे फेलियर का. So see, his idea of socialism dominated the economic growth and development of this country. He created planning commission. Planning commission centralized all the economic development. Obviously, जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर कैसे फ्लरिश करेगा भाई? भाई कल को गवर्नमेंट आ जाए कि हम ही कोचिंग पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे कोचिंग, नहीं? सो लोग जाएंगे भाई गवर्नमेंट कोचिंग पढ़ा रही है गवर्नमेंट, इवन तो लोगों को पता है वो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी भाई गवर्नमेंट अगर कुछ पढ़ाती है तो तुम पढ़ने क्यों आते हैं यहाँ पे? अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो यहाँ क्यों आते तुम? राइट? तो लॉजिकल है कि गवर्नमेंट बोले हम पढ़ाएंगे. फाइन. गवर्नमेंट सेज वी विल मैन्युफैक्चर, वी विल डिलीवर, वी विल प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज. हम सब करेंगे. हम फोन भी बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे, सिम भी बनाएंगे, और हम तुम्हें BSNL के थ्रू सर्विस भी देंगे. राइट? What is it? Is it welfare or monopoly? But this is the idea of socialism. This is the idea of Nehruvian model. He believed that government's monopoly would ensure welfare for everyone. Imagine public interest का क्या हुआ? Monopolized. And that we saw the decline of public interest. Why? Government's monopoly made government very autocratic, corrupt. कि भाई आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग. राइट? अब तुम ले लो कहीं और से, हम ही देंगे. लाइसेंस कौन देगा? मैं दूंगा. परमिशन कौन देगा? मैं दूंगा. हु विल अप्रूव दिस लैंड? आई विल अप्रूव दिस लैंड. हु विल अप्रूव द लाइसेंस? हु विल अप्रूव द इंडस्ट्री? वी विल डू एवरीथिंग. See, and we'll do everything for you, and so we have that ego that we are the one working for you. See, all these aspects have been explored by Weber, right? Fayol,
Golekar, many of these scholars theoretically, that why bureaucrats develop the ego they have. तो अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट यहां की पर्सपेक्टिव से देखो, so it seemed to be good, right, but not exactly too good to be true. कि एक ब्यूरोक्रेट जो हमारे लिए सोचे, सब कुछ हमारे लिए करे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो करप्शन फ्री हो, राइट, प्लानिंग कमीशन जो सबके लिए प्लान, इज इट पॉसिबल दैट इट विल हैपन? It may happen for some time, but the moment somebody realizes we have monopoly, what will happen? They will become corrupt. And this is what happened in India. And that is why in 1991, Manmohan Singh and Narasimha Rao Manmohan model, या LPG रिफॉर्म लाया गया. It was necessary. You see, the nature of public interest change हो गया. अब पब्लिक इंटरेस्ट पहले गवर्नमेंट सर्व करती, अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई सिर्फ हम नहीं कर सकते, राइट, देयर इज नीड फॉर प्राइवेट. इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, सी यू गो एंड रीड PYQ 2025 का, जाके PYQ क्वेश्चन पढ़ो पबैट का, फाइन, पार्ट ए पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सी यू विल अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाई आई सेड इफ यू डेवलप अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन राइट, बट तुम्हारे पास वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए. You need not mug up the definition given by Nicholas Henry, L.D. White, Waldo, वो भी mug up करेंगे, लेकिन बिना समझे नहीं. Right? Memorization is part of study, no doubt. 40% of this exam you need to memorize. But memorization without any consciousness is useless. Right? That is why you fail to write good answers. क्योंकि आपका शब्द ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, आंसर्स नहीं. Have you understood this much? So हम कल सिलेबस एक बार पढ़ो फिर से, राइट. आई हैड गिवन टास्क टू स्टूडेंट्स कि भाई राइट टुडे, रीड द सिलेबस, राइट. लेट अस स्टार्ट विद दिस आइडिया, विल स्टार्ट विद हियर ओनली, राइट. व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? फाइन, जिनके पास बुकलेट्स हैं वो ले लो, पढ़ लो. फाइन, those who have PDF notes, you can just start, you can read. If you want handout 1, right, first chapter. But whatever we'll write in the class first, that is important. Then आप handouts को पढ़ो. Fine. Then if you want, over the time, after 2 weeks, 3 weeks, you start reading PYQs, right? I don't need to tell you. वो अपने आप समझ में आएगा. Fine. We'll keep discussing what is needed in the class. वो सब हम करेंगे already. When you say current affairs, right, you don't have to be bothered about it. I am more updated than you are. That you will find out over the time. Fine. Plus, जो भी जरूरत है, that has to be provided in a relevant manner. You understand? So there is a Bridge magazine that we bring, PDF है. उसमें ethics, ethics, PubAd, Indian administration, theoretical models, we keep updating it, right? You can use it. Secondly, जो भी जरूरत होगी मैं already बताऊंगा. उसकी वजह से you will understand कि मुझे कैसे use करना है. Because by the time you write your mains, fine, कुछ और current affairs होंगे नहीं. तो ये important है कि जो आज relevant है हम वो लिखें, जो कल relevant है वो आप add कर लेना. But you should know the method how to add it. Fine. So we'll do this way. Fine. As of now, we'll have 5 days class. If there is a need, then on some Saturdays we can also have classes. So I'm telling you beforehand, not now, not for this month. Fine. We'll start slow and steady. You देखी रहो, right? बहुत सारे offline, online है, online तो online है ही बेचारे. Fine. E aspirant, नहीं? आजकल ई एस्पिरेंट ज्यादा एस्पिरेशनल है बेचारे. पी एस्पिरेंट्स गायब है, फिजिकल एस्पिरेंट्स. सो इट्स ओके, राइट, बट इट डजंट मैटर, राइट. अल्टीमेटली पीपल स्टडी. सी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हम रात में पढ़ते हैं, राइट. बट मैंने उनको बोला कि क्षमा करो, मैं रात में नहीं पढ़ा सकता, बट फाइन, मैं सुबह ही पढ़ा सकता हूँ. सो लॉजिकली, राइट, आप अपनी पेज से पढ़ो, नो प्रॉब्लम. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. बट आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि वो टास्क कंप्लीट करो. कंप्लीट द टास्क. फाइन. some may take 1 hour, some may take 1.5 hours. Task complete karo, even if it is a small task. So if you're reading 2 pages, 3 pages a day, or your notes once a day, fine, you will realize you don't need anything else, right? At least for PubAd, governance and many other things, you don't need anything else. Fine. But obviously I'm not going to teach you GS.
but I will give you a strong input for your general studies that you will automatically realize when you'll start doing your GS. Right? आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा मैं ओवर द टाइम. ठीक है. थर्ड एस्पेक्ट है कि whenever you are writing answers, try to enrich your vocabulary. Enriching vocabulary does not mean that you have to write triestecophobia. What is it? ये वर्ड नहीं सुना है कभी? सुना होगा. Triestecophobia. फोबिया तो पता ही है. फोबिया ऑफ गवर्नमेंट, फोबिया ऑफ पॉलिटिक्स, फोबिया ऑफ पॉलिटिशियन, तो है ही. फोबिया ऑफ 13, फियर ऑफ नंबर 13, ट्राइएस्केडेकोफोबिया. तो ये नहीं याद. फियर ऑफ नंबर 13 भाई. तो मुझे नहीं पता 13 नंबर ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, इनऑस्पिशियस माना जाता है. फाइन. मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स में 13 फ्लोर, मतलब 13 फिजिकली है लेकिन न्यूमेरिकली नहीं है. फाइन. इसलिए तुम कभी पहुंच ही नहीं पाते 13 पे. तो राशि इज करेक्ट. यस, फियर ऑफ 13, राइट. नाउ यू डोंट हैव टू मेमोराइज वोकैबुलरी लाइक दिस. ऐसा नहीं करना है. फाइन. शशि थरूर नहीं बनना है. फाइन. तो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का सेंस है पबैड, राइट. आवर सब्जेक्ट गवर्नेंस, देयर इज अ वोकैबुलरी रिलेटेड टू दैट. सो इफ आई से पब्लिक इंटरेस्ट and when I use the word Gandhian, I may add to it Gandhian philosophy or socialism. Gandhian socialism. So rather than सिर्फ लिखना Gandhian philosophy, मैं उसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ Gandhian socialism, या Nehru's philosophy, Nehruvian socialism, ब्रैकेट में Fabian. So that is the meaning of vocabulary. Relevant terms लिखने हैं, right? And will develop you how you can write good answers. Fine. I don't think you do have any doubt right now. Fine. बिकॉज लंच टाइम हो गया तुम्हारा. ज्यादा ज्ञान हो गया एक दिन में? नहीं हुआ ना. कल ज्यादा करेंगे फिर. ठीक. फाइन. इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी, राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ यू. सो इफ यू रन, विल रन मच मोर फास्टर देन यू आर. फाइन. एनी अदर डाउट यू हैव? न्यूज़पेपर्स डू यू रीड? ओके, व्हिच न्यूज़पेपर यू रीड? इंडियन एक्सप्रेस. फाइन. हिंदू, हाउ मच आवर्स इट टेक्स टू finish Hindu paper? 1.5 hours. Reduce that time slowly. You are supposed to give prelims this year? नहीं. ठीक है, very good, बहुत अच्छा है. Right? Over ambitious होना भी नहीं चाहिए. ठीक है. So even if you want to give prelims, it's okay. You can. Right? Whatever we are going to do in this optional, right? आपको सिर्फ वो जाके पढ़ना है बस. Fine. That's a guarantee. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो रिवाइज करना है. हाँ, sometimes Sundays if you are free, Saturdays तो लेक्चर्स को रिव्यू कर लो. सर इन इंडियन एक्सप्रेस साउथ वर्जन हो के, हाँ, इट डजंट मैटर. आपका इंपॉर्टेंट फोकस है बेसिक फैक्ट्स, पॉलिसीज, राइट. कुछ करंट इश्यूज रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए, यू कैन यूज इट, राइट. अगर कोई डेवलपमेंटल पॉलिसी आई है या उसका डेटा आया है, रीजन फॉर फेलियर, डेटा, या पॉलिसी कहीं सक्सेसफुल है कहीं नहीं है, इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज इट, राइट. ये आपके जीएस में भी काम आएंगे, ऑप्शन में भी काम आएंगे. सो यू डोंट हैव टू नो द एंटायर न्यूज़पेपर, यू हैव टू जस्ट यूज some aspects of newspaper, right? Rest, obviously UPSC also doesn't make question paper on using newspapers. Fine. उसको भी पता है कि ठीक है भाई, पूरे न्यूज़पेपर से तो पेपर नहीं बन सकता. हाँ, जनरल स्टडीज के कुछ पोर्शंस हैं जो डोमिनेंट है, न्यूज़पेपर सेंट्रिक है, राइट. इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, साइंस टेक है, पेपर 3. That is why scoring there is little difficult, because that is lot of, current perspective. Fine. If you get IR in ethics, international relation, right? So ethics in IR, sorry, then that portion may also be more contemporary. Or IR in paper 2, तो वो थोड़ा contemporary है, right? बाकी you can see most of them are static. They are not very dynamic, right? So even if you say, oh, civil society पे question आया, अभी जो perspective था, right? उसमें कुछ भी बहुत नया नहीं होता है कभी. Your examples can be new. The civil society in India, fine. This year governance paper, there is a question. Right? This is the starting line we do when we start public administration. That is the starting line. Imagine. वो यूपीएससी का one of the high level है गवर्नेंस में क्वेश्चन पूछने का, जो पबेट का स्टार्टिंग लेवल है. Right? It's a statement by नीरजा गोपाल जयाल, स्कॉलर है, उसका स्टेटमेंट है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिविल सोसाइटी
has been, or its emergence has been more destructive than constructive. नहीं, सबसे बड़ा तो डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है कि केजरीवाल became the chief minister from the civil society movement. नहीं है? But that's not example, right? That you should not write. Destructive क्यों है? Because every civil society emerges, right, as a counter movement to government. हमारे यहाँ सोशल मूवमेंट का मतलब क्या है? कि सरकार को क्रिटिसाइज करना. दैट इज इनहेरेंट टू आवर पॉलिटिकल प्रोसेस. हमारी जो अपब्रिंगिंग, हमारा जो लॉजिक है वो उस पर बेस्ड है कि अगर हमें अपना मूवमेंट करना है तो कैसे होगा स्टार्ट? द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. वी नेवर थिंक दैट कैन वी एसोसिएट विद द गवर्नमेंट एंड परफॉर्म समथिंग बेटर. कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटी वो हमारे दिमाग में नहीं है. ठीक, ये हम फर्स्ट थिंग पढ़ते हैं पबैड में, ये गवर्नेंस के पेपर में, सोशल कैपिटल, राइट. तो हमारे पबैड का जो सबसे बेचारा नकारा बच्चा होता है उसको भी पता होता है सोशल कैपिटल क्या है, राइट. उसको गवर्नेंस के पेपर में पूछ लिया, लोग की हालत खराब हो गई. क्यों? सी, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेंसिबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, राइट. सिर्फ इंफॉर्मेशन सेंट्रिक नॉलेज नहीं है इंपॉर्टेंट. 10, 20, 30 मार्क्स जो इंप्रूव हो सकते हैं वो कहां से? इससे इंप्रूव हो सकता है. So it may be possible that a lot of students are equally intelligent and they may be getting almost similar marks, but somebody who has a better perception or better understanding of things, right, उसके 15-20 marks ज़्यादा हो जाएंगे. ये difference होता है टॉपर और नीचे वालों में. Fine, कोई तो कैसे भी हो सकता है, that's okay. Fine, at least in prelims you can, right. You know there are people who are no prelim centric. Every year they qualify prelims, but never they qualify mains. They are wasting the seat of the actually good student, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टीज कर लिया प्रीलिम सॉल्व करने में, राइट. बट मेंस कैसे आएगा? पर्सपेक्टिव से. प्रीलिम्स फैक्ट से क्लियर हो सकता है टू एन एक्सटेंट, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आपको चाहिए, डायमेंशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो डेवलप होता है. सी, यू कैन नॉट सिंपली हैव नोट्स मग अप एंड से कि अरे मुझे आ गया. फाइन, वो आपके अंदर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर प्रोसेस डेवलप होती है. फाइन, यू आर यूनिक and you should use that ability, you understand? Don't become clone of others. नहीं कि इस टॉपर ने जो है येलो शर्ट के साथ जो है ग्रीन पैंट पहनी थी, अच्छा ठीक, फाइन, मैं भी पहन के घूमता हूं, बन जाऊंगा मैं भी. नहीं, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, चलो देन सी यू टुमारो, राइट. काइंडली गो थ्रू द सिलेबस वंस, राइट. इनफैक्ट आई वुड से रीड पेपर 1 सिलेबस, ट्राई टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स. पहले 2 यूनिट्स को याद करो अगर हो सकते, मेमोराइज नहीं करना, बट जस्ट नो अबाउट इट. Which one? The other which we have put already lot of, कोई जरूरत नहीं है. See, वो जो 6 लेक्चर्स हैं that is on the app for prodigies, that is a physical students claim, right. कोई जरूरत नहीं है, आप हम सब डिस्कस करेंगे. हैंडबुक सॉरी नो हैंडआउट यस. हैंडआउट्स पहले क्लास नोट्स पढ़ना है ऑल ऑफ यू. फाइन, क्लास नोट्स ही मेन है, फिर हैंड आउट या हैंडबुक जो भी है पढ़ जाएगी. सो व्हेन आई टेल यू, यू कैन रीड इट. अभी आप चाहो तो 1-2 पेजेस पढ़ सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. इंट्रोडक्शन यू कैन रीड, राइट. यू डोंट नीड एनी अदर बुक अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट. दैट हैज बीन कंपाइल्ड इन अ वे कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है. फाइन, तो आपका पैसा बचना चाहिए कि नहीं? सिर्फ पैसा नहीं, टाइम बचना चाहिए. ठीक है, फाइन. सी यू देन टुमारो. Okay. All the best.